अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत, शुभ संध्या सभी व्यूवर्स को जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से और साथ में रेड एफएम जेके ये लाइव प्रसारण बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बनाम सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के बीच एक और बेहतरीन मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है यह टीम सोपोर स्टैलियंस ने। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में, रॉयल गुडविल की टीम एक हर्डल बना करके सोच विचार मंथरा चलते हुए शुरुआत बेहतर रहने वाली है, एक संघर्ष रहने वाला है इस मुकाबले में। मेरे साथ मनवर जुड़ चुके हैं। मनवर, स्वागत है आपका इस बड़े मुकाबले में। Well, thank you, Nazir. Assalamu alaikum and good evening to all the beloved listeners across the globe and from Jammu and Kashmir, including Ladakh. It's from our side. Assalamu alaikum once again. It's game time in the middle. We got Sopore Stallions on one end. On the other end, it's Royal Goodwill Cricket Club, who won their 3 games on the trot. 3 successive wins in Red Premier League Season 2. The title partner JK Super Cement and presented by Athwas Retail. And Athwas with confidence. Good crowd is in. People are still flowing into the stadium, coming in good numbers to watch their local stars. And we got one of the biggest name in Jammu and Kashmir cricket, that is Parvez Rasool, who's captaining Sopore Stallions side. He won the toss, and without wasting any energy and time, he decided to bat first. And Royals are going to field first in today's match. The 2 openers in the middle, and there is Fayaz Sarwar, and he's got Ankit Narwal, the other opener. And the 2 openers are looking okay today, looking fine today. Umpire is having a word with Narwal there. And Narwal is all set to face the likes of Ishtiaq Rasool. Nag has got the ball in his hand. As I earlier mentioned, the Royals are enjoying their royal ride. Their royalty continues in the valley as they are rising to the occasion time and again, setting things ablaze, and played their own brand of cricket. It was all about that kind of that Baz ball and the Bruce ball approach in the valley. Talking about that inaugural game of the tournament, it's where they set the tone, beating experienced lads who have played domestic level cricket and they were beaten. And it's because of Royal Goodwill, the way they kept them on their toes and going on to climb the victory. And it started there and it continued for the next 2 games. Here they are on the field for match number 4, and overall it's game number 17, day number 10, ball number 1. Here is Nag for the first time, and first ball is right up into the air. There is a man at mid-off. Yashgag is taken, and Ankit Narwal has gone on a very first ball. It's a golden duck. And Nag has the last laugh. Nag has his man here. And Yashgag makes no mistakes, settling underneath the ball. Waited for that one with cool and calm head on his shoulders. He's taken at mid-off. First blood is drawn. Huge and massive wicket this. Ankit Narwal trying to flick it round the corner. You can see that sadness on his face. Disgusted as he walks back, trudges back to hut. It's none for 1 in over number 1. खराब शुरुआत, पहली गेंद पर सफलता नाग को। अंकित नरवाल एक बार फिर निराश किया अपने फैंस को, अपने प्रशंसकों को, अपनी टीम को। 0 पे आउट होकर मैदान से बाहर। पहला विकेट 0 पे, नाग को पहली गेंद पर सफलता। अंकित नरवाल कट, यश गर्ग बोल्ड, इश्तियाक रसूल 0 1 गेंद से। और वापस निराशा उनके चेहरे से साफ झलकती हुई सोपोर स्टैलियंस ने पहला विकेट गंवाया 0 पे, और अब जाकर के नंबर 3 पे फयाज सरवर के साथ आज शुरुआत की थी अंकित नरवाल ने। हालांकि अहमद उमर पांडे आज टीम का हिस्सा नहीं है, समित कुमार को जगह मिली है, उसके अलावा गुलजार गुली। ये 2 चेंज आज देखने को मिलेंगे इस टीम में, और 2 खिलाड़ी आज इस टीम में खेल रहे हैं। अहमद उमर पांडे टीम का हिस्सा नहीं है, और उसके अलावा एक और अन्य खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये शुरुआत अच्छी नहीं, पर सोपोर स्टैलियंस को आत्मविश्वास के साथ पहली पारी में बल्लेबाजी करनी, और उतना दबाव नहीं होगा क्योंकि पहली पारी में आप एक टारगेट सेट करें। और पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में, कम से कम 60 से 70% मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता भी रहती है, आंकड़ा जरूर रहता है। पर सोपोर की शुरुआत खास रही नहीं। इश्तियाक रसूल, अजीम काजी बाएं हाथ के बल्लेबाज नंबर 3 पे सोपोर स्टैलियंस के लिए
फयाज सरवर 0, अजीम काजी 0 और अंकित नरवाल भी 0 पे चले गए हैं वापस। वो 0 पे विकेट भी पहला गवाया यहाँ टीम सुल्तान के विरुद्ध, क्षमा कीजिएगा, रॉयल गुडविल के विरुद्ध सोपोर स्टैलियंस ने। रॉयल गुडविल अच्छी शुरुआत, नाग हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर। पिछले तीनों मुकाबले जीत करके आए, 6 अंक तालिका में इस पूल में सर्वश्रेष्ठ। सोपोर स्टालियंस का ये दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जीत करके आए, 2 अंक उनके पास। ये गेंद इस पर तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला जरूर, फील्डर तैनात आदिल ऋषि के पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई, रन बनने की संभावना नहीं। विकेट कीपर वाहिद तेली, रूपशी टीम का हिस्सा आसिफ मंजूर। और उसके अलावा अगर जिक्र करें तो नाग और कुछ अन्य आकिब मीर का चैन टीम में, हालांकि जहांगीर लोन टीम का हिस्सा नहीं है। इस बार गैप में खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। पहला चौका इस पारी का और पहले रन्स आते हुए सोपोर स्टालियंस के खाते में, 4 बगैर नुकसान के। और इससे पूर्व 1 विकेट गंवाया है, 1 विकेट 4 रन, इस समय कुल रन संख्या 1 विकेट। यह अच्छा स्ट्रोक था, गैप में 1 विकेट गंवाया है अंकित नरवाल के रूप में सोपोर स्टालियंस। फयाज सरवर और उनके साथ अजीम काजी, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में, एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी कर रहे, एक चतुर गेंदबाज है। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर गैप में धकेला है, एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ अजीम काजी के बल्ले से। 3 गेंदों से 8 पर पहुंचे, कुल रन संख्या 8, 1 विकेट के नुकसान पे सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। और सोपोर की टीम चाहेगी बेहतर शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब आकर्षक ये स्ट्रोक। अजीम काजी आज आत्मविश्वास में, और उस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करना अवश्य यहाँ पे इस मुकाबले में सोपोर स्टैलियंस के लिए। 1 विकेट गंवा चुके हैं उनकी टीम। इस बार रॉन साइड में 1 रन के लिए दौड़ पड़े, पलटकर दूसरे रन के लिए, और जब तक थ्रो आता सीधा स्टंप्स पे लगता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था, पर यहाँ 2 रन जरूर मिले। दोहरे अंकों में रन संख्या 10, 1 विकेट के नुकसान पे अजीम काजी, फयाज सरवर, ये 2 नाबाद बल्लेबाज। फयाज सरवर को खाता खोलना बाकी है, 4 गेंदों से 10 रन अजीम ने बनाए हैं। अंकित नरवाल एक बार फिर निराश किया है, पिछले मुकाबले में भी उन्होंने निराश किया था, इस मुकाबले में भी एक बार फिर निराश किया है। और पिछले मुकाबले में अहमद बांडे ने जो शुरुआत दी थी, वो आक्रमण किया था फयाज सरवर के साथ, और उसके दम पे 208 तक पहुंची थी सोपोर स्टैलियंस की टीम। Nag removed one of the batters early. That one, a quality pull shot in the gap, down to the boundary for 4. 14 for 1 after the completion of first over. 3 boundaries coming, 3 fours coming in and over here. Very removed, the likes of Ankit Narwal on a very first ball. Oh, cool, calm, in control. Just very well. Look at Nasir Kumar. Isn't happy with his bowler there. It is easy pickings for Kazi, and Kazi in his own style, in his Kazi style, getting 3rd boundary of the over onto 14 of 5 balls. It's 14 for 1. Fayaz Server, the Sopore based cricketer, is going to face the likes of Yash Garg, the man who's picked up 14 wickets, who's holding that purple cap in the tournament. 14 wickets, the leading wicket taker of the tournament, is getting ready to operate. The man who wreaked havoc with the ball, unplayable throughout the tournament. Can Stallions find a way? Will they keep that threat away? He's got that potential and ability. What they gonna do now? Azim Kazi on to 14 of just 5 balls. Server will face the likes of Yash Garg. He was alongside Ankit Narwal at the top of the order. For the first time he will face ball number 1 of the fresh over. Yash having a word with Nasir Kumar there. He's getting ready. Crowd settled in good numbers to watch this one, which promises to be a big one of the summer here. 14 for 1. Here is Yash for the first time today. Dead ball signal. There is a man in slip coordinates, Asif Manzoor. The man with cool hat is in slip cordon. Here is Yash for the first time. Soft hands, very watchful. I think Sopore Stallions gone through different videos. They have tried to check those videos, how he's bowling. What I believe, what I suspect. The next one is worked away nicely. Fine down to the
short fine area, there is a possibility of a single 15 for 1. I was talking about that. I think the batters from Sopore Stallions have gone through different video clips. And that remains to be seen how they have gone through the different video clips and the slides. And that will be a thing to find out how they gone through the different clips. Have they gone through all the videos that are available on social media nowadays, even on YouTube? Because Yash Garg, the way he bowled, all the batters would try to read him and find out what kind of skills he's got. Let's see. 15 for 1. This is over number 2. Yash in his very first over. Good delivery again. Solid in defense. Right behind the ball. There is going to be little pressure, little amount of pressure at the beginning of the innings, as they lost one of the batters in the very first over in the form of Ankit Narwal, a cricketer who believes in attack, known for rapid starts, but not providing that kind of a start today. Couldn't start the way Sopore Stallions would have wanted. He was sent packing without scoring. It was Nag who drawn that blood, and now it's Yash Garg from other end. He's holding that white cherry in his hand, the ball in his hand, which is shining bright at the moment. They're having some issues with the laser lights there, and he's asked her to keep it quiet and switch off those lights there. And now he goes for the sweep. The conventional sweep shot comes out against the left-hander there. There is production, will just be 1. Trying to cut out that turn of the ball, the drift of the surface. And he decided to go with that sweep shot. Get a success, keeps it away. 1 more run, 16 for 1. Yes, just 2 of 4 balls. And now Fayaz Sarwar is in danger here. That's aerial, that's uppish. 2 men converging. And Rishi dropped. Should have been taken. Yash Garg can't believe. You can see the reaction of Yash Garg there. Oh, he can't believe this. Pretty sad for bowler there. Should have been taken. A danger man like Fayaz Sarwar. You can't drop him. He was undone with a beauty. Flighty trajectory used by Yash Garg there. Trying to trap him. Almost a wicket. But that's gone down. And that's what Stallions require at the moment. They need that. Would have been wicket number 2 down. And Yash Garg almost provided that wicket. The next one, oh, what a delivery again. That's why I use the word unplayable in the tournament. He's calling the shot and he's troubling the batters. It's 2 done, 1 for 17. No problem with the scorecard at the moment. They're after kind of flyer, we can say that. But they won down in the meantime in the form of Ankit Narwal, the batter who has astonished everyone in Delhi. When it comes to the local cricket there, the league-based or the franchise-based tournaments, has been the pick-off. When it comes to the scoring runs, he has been the one who has found runs. But here he is struggling. It's a kind of drought continues in the valley. First game for Stallions, gone early, falling cheaply, fell cheaply. Once again, he's gone without doing anything. Gone for golden duck. It's 17 for 1. We're going to be in over number 3. It's over to you. धन्यवाद. 2 ओवर 17 कैच छूटा जरूर सर्वर का आदिल ऋषि द्वारा. एक जीवनदान पर इस जीवनदान को अब एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना अवश्य है. और ये जीवनदान कितना महंगा पड़ सकता है फयाज सर्वर का, ये देखने वाली बात होगी. इश्तियाक रसूल नया ओवर प्रारंभ करते हुए ऑफ स्टंप पर नीची गेंद पड़ने के बाद उतना ज़्यादा उछाल था नहीं, सीधे खेले ऑफ साइड में. हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात जब तक भी गेंद को फील्ड करते कवर क्षेत्र से. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. 17 पे 1, 2.1 ओवर की गेंदबाजी. ये 17वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस यहाँ इन 2 बल्लेबाजों को दिखाना होगा. इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले और खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया. गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. चौका मिलता हुआ एक बार फिर. और नाहक के विरुद्ध लगातार प्रहार. पिछले ओवर में भी वो 3 चौके जड़े थे वहां काजी ने. इस बार फयाज सरवर ने आगे आकर के ये स्ट्रोक लिया, निडर होकर के एक अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास. चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. लॉन्ग ऑफ पे ये चौका. रन संख्या 21 एक विकेट पे 2.2.
2 ओवर की गेंदबाजी। सर्वर 6 पे अजीम काजी 15। सर्वर सामने, तीसरा ओवर नाग का, दूसरा 1.2 में 18, 1 विकेट, वो मात्र 1 विकेट हाथ लगी है और वो विकेट नाग ने दिलाया था। पहली गेंद पर अंकित नरवाल को वापस भेजा था और उसके बाद से अजीम काजी, हालांकि पिछले ओवर में फयाज सरवर का वो कैच छूटा आदिल ऋषि से, और वो कैच कितना महंगा पड़ सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फयाज सरवर एक बेहतरीन बल्लेबाज है, पर सोपोर स्टालियंस की टीम को एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। या पावर प्ले में आपको विकेट को सुरक्षित रखते हुए बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, प्रयोग करना है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में, लेग स्टंप की शेद में गेंद पर उनसे उनके पैड अथवा ट्राउजर से लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या भी टिकी हुई 21, 1 विकेट पे। तीसरा ओवर दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ खूबसूरत बख्शी स्टेडियम में, ऐतिहासिक मैदान। रॉयल गुडविल का मुकाबला सोपोर स्टैलियंस के साथ। स्टैलियन का दूसरा मुकाबला, पहले मुकाबले में जीत अर्जित की थी बड़े मार्जिन से, स्पेक्ट्रम को हराया था, 2 अंक प्राप्त किए थे, और इस दूसरे मुकाबले में अपने पूल से एक और जीत अर्जित करने का प्रयास होगा। पर वही गुडविल जो सर्वश्रेष्ठ अंक तालिका में पूल से तीनों मुकाबले आपने जीते हैं। एक बार फिर डाउन द ट्रैक देखते हैं, गति को थोड़ा कम किया, लेंथ छोटी छोटी की, ये देखते हुए कि थोड़ा स्टेप आउट करके बाहर निकल रहे हैं, डाउन द ट्रैक आ रहे हैं। ऐसे में चतुराई के साथ ये फेंकी हुई गेंद फयाज सरवर के लिए। रन तो जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और खाते में 22 पे 1 लेग बाई के रूप में ये रन मिलता हुआ, अथवा बाई के रूप में लेग बाई। रन संख्या 22, 1 विकेट पे 2.4। तीसरा ओवर 22 रन 1 विकेट। अजीम काजी 15 पे 8 के 2 से सामने, 3 चौके वो अब तक लगा चुके हैं। और पिछले ओवर में नाग के विरुद्ध उन्होंने कड़े प्रहार किए थे, इस बार फिर एक बार सामने नाग के साउदर्न पवेलियन एंड से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और इस बार पटकने का प्रयास, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, दिशा देना चाहते थे, भाग्यशाली रही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और चेतावनी कि आप एक ही बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे में अंपायर से कुछ बातचीत होती हुई, और रवि कुमार हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे, कुछ बातचीत जरूर इश्तियाक रसूल से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिशा देना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे, पर वो संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में अगली गेंद इस बार गैप में, पर पीछे फील्डर आदिल वानी अथवा अन्य दीगर कोई खिलाड़ी, वैभव माली, और माली ने गेंद को फील्ड कर लिया। यहाँ ओवर की हो गई समाप्ति, 3 समाप्त 22, 1 विकेट पे सोपोर स्टैलियन। शुरुआत अच्छी हुई है, 7 से ऊपर का इस समय करंट रन रेट है 7.33 का, पर 1 विकेट अंकित नरवाल का, एक बेहतरीन विकेट मिली है वहां पर टीम रॉयल गुडविल को। पर जहां से फयाज सरवर और अजीम काजी, हालांकि सरवर को भी एक मौका मिल चुका है, तो इस मौके को अब एक बड़ी पारी में बुनना जरूरी है। सोपोर स्टैलियंस को एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, 6 ओवर बेहतर तरीके से आप निकाल लीजिए, थोड़ा रन गति को सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, तो एक बेहतर तरीके से आप विकेट को, गेंदबाज को पढ़ लेते हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित कर लेते तो फिर बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर सोपोर स्टैलियंस के लिए। फिलहाल 3 के बाद 22, 1 विकेट पे। Yash to continue. Captain believes in Yash Garg. Is going to bowl from Southern Pavilion and server on strike. Good delivery to start with. Could be tight. Need to be quick. Need to be hurry. He's okay. He's fine there. No problem at all. It bounced in front of stumps and gone over the stumps in the end. So no problem there. He survives. Good one from server there to get off strike. Because Yash Garg isn't easy to pick, it is better to rotate strike. Don't let the ball settle down. If you face too many dot deliveries, that will allow Yash to settle down a bit. And he can weave that web. In the meantime, there is little adjustment. Man at long off is asked to stay a bit straight. Adil Wani. He's got the boundary rider for Azim Kazi. He's now long on because it's a left hand on strike. Azim Kazi. Kazi is played on. He's dragged on. It's wicket number 2 down. Kazi little away from the body. And Yash Garg, what a season he's having. Tournament. He is never gonna forget this. He will remember this tournament forever, for ages. What a tournament and what a season he's having here. Look at that one. It says touch low. One-handed shot comes into play. Almost broken his back. And Azim Kazi is on his way. Second one. Another big one. And that's a massive wicket for Yash and Royal Goodwill this evening here. And wicket number 2 down. Azim Kazi departs, shown some intent for a while, and is going back to pavilion in a hurdle again. And why not?
as they picked up 2 important wickets. Bowled Yash Garg, gone for 15 of 11, 3 fours, strike rate of 136, and that brings another left-hander. He comes out to bat at number 4. Weber Mali is playing for Royal Goodwill today. They have Yash Garg in the lineup. Sumit Kumar, is it? I think. Is it Sumit Kumar? In at number 4, the left hand comes out to bat. I think it is to cut out those deliveries which turn into the bat and sometimes drift away. And let's see what he's going to do now. Sumit Kumar to face the likes of Yash Garg. Who will rise and who's going to fall? Find it out. Sumit Kumar on strike. Little amount of pressure. I think not just little but huge amount of pressure. I think that because of that, because of those 2 wickets they lost earlier on, 2 big lads sent packing. Straight away worked away nicely. Good shot in the gap. There is a man scared on the on. He's quickly onto the ball. Can't prevent Sumit from collecting that second run. 25 for 2. We are in over number 4. This is Ishtiaq Rasool, the captain upside. He's trying to fix his pad there. Weber Mali is there. He's a bit busy with Sumit Kumar. It's 2 for 25. Sumit gets a game for Sopore Stallions. Yash to continue. Yash has picked up 14 wickets in the tournament. Prior to this one, this is the 15th one he got in today's match. That one, it was the 15th one. Now he's the leading wicket taker again. He's leading on top. The next one is clean bowled. Wicket number 3 down. Sumit Kumar perishes, trying to slog it. It is Yash Garg who rises to the occasion. Sumit Kumar falls, and Sopore Stallions are 3 down. Another dent. It is Yash Garg. This is wicket number 16 in the tournament. It's the 16th wicket for Yash Garg. What a tournament he's having. He's making batters dance to their tunes. He's troubling, unsettling batters here. The one was really trouble at the batter. Sumit Kumar like batter, who batted like a champion other day. But today, not his day. He's on his way back to pavilion. Big one. Huge one. Not just massive. It is of next level. Believe me, that is a big, big blow. 3 for 25 now. And Yash Garg, he's wreak havoc. Once again coming up with unplayable ones. But that one, there was no need to go for that kind of a slog hit. It was better to take time. Well, people may disagree with my opinion, but what I believe, as you're too early down, you have to stick to the basics. You need to rotate strike. This is the idea. You have to adopt that habit. People will talk about it, but you never know what the reality is. You can't go against the line of the ball like that, trying to slog it away. That wasn't needed there. It was better to stick to the basics, and it was better to read the surface and try to understand what Yash Garg has in store, and the way he decided to slog it away. And in that process, ball stays touch low, or it dropped a little bit all of a sudden in the end, and going on to hit the middle pole, and that exposed Sumit Kumar badly here. Can we have the replay? Yes, it is the replay of that. Oh, it is Azim Qazi who got played on of his bowling. And now this is going to be the turn of Sumit Kumar. How he lost his shape. Take a look again. And that's what exactly I was talking about. And this is Yash Garg for you. He's got the turn there. And that turn deceived the batter. He was eyeing that pull shot. He was trying to smoke and slog it away. But in the meantime, he lost his shape and balance. Clean bowled. Got cleaned up. So they are 3 down, 25 on the board. Now they need a partnership here. Somebody need to find a way to keep the bowlers away. Oh, look at that one. He's got that pace. Now he's troubling. He's got that severe pace right now. The ball is kicking and jumping. It's
It's climbing onto the batter and around that chest area onto the front foot, then still keeps it down. That's the beauty of Fayaz Sarwar. Onto the front foot, almost 22 centimeters outside the crease, and keeps it away to offside. One more run taken, and Fayaz is doing that well at the moment. He knows that he has to keep himself away from strike. Whenever he gets an opportunity, it's better to rotate. Don't let the bowler settle down. Bowler will definitely try to bring in those variations where it won't be easy to keep it away time and again. You will find it bit hard and tough to keep that threat which is being posed by the bowler. And Yash Garg, what a tournament he has got. He's enjoying his time in the city of Srinagar. Another day. He has picked up 2 in his very first. And 2 great batters, Sumit Kumar and Azim Kazi, are back to hut. Next one, rock back. Solid block from Asif Ramzan. Now the 2 local lads in the middle. Asif Ramzan from Pampur, Sarwar from Sopore. Can they stitch a partnership? Are they gonna step up? They need someone to take that responsibility. Trying to flick it round the corner. Not a clean stop. But still manages to stop the ball. Would have been 4 leg buys. And limits it to solitary single. 27 on the board for the loss of 3. Stallions won the toss. Parvez Rasool decided to bat first. Knowing that in the second innings, this wicket gets a bit difficult to chase. At times, there is a slow bounce on offer. At times, ball keeps low. Look at that one. In the second innings, we have seen that it deteriorates further. We have seen it worsening. In the chase, it's 3 for 27. We are in over number 5. Tight power play continues. Royal is enjoying. They are on top. Even that catch gone down after that. They picked up 2 more wickets. Bad delivery, bad line. Adilwan is there to take care of everything. Just a single to end the over. He will keep the strike. Fire done. It's 28 for 3. Sarwar batting on 9 of 11 balls. Fayaz Sarwar. Need that character of Sarwar. He has to bat like that. As in desperate need of a partnership. One man has to step up. An inning of high caliber and class is required by Sopore Stallions right now. And looking at this pool, it's the tight one. We are all the big teams in this pool. We have Royal Sultan Warriors. And we have Spectrum Kings, Pampur. They got out. They lost 4 of the games on the trot. Sultans are there. Royals are there. Sopore Stallion is in there in this pool. And there is Atwas India 11. The 5th one driven straight. And bowler unable to lay hand onto it. There was no connection. And straight away he says, no. There was no connection. Hit hard straight down the ground by Fayaz Sarwar. This time he read it nicely. Now it's going to be left-hander Asif Ramzan. Look at that. Hit hard straight down the ground. Would have been a 4. It is bit unlucky there, batter, as it met with the stumps on the other end. Either side of the stumps would have been a boundary because there is no one at long on. The mid-on is up inside. Yes, once again. Asif Ramzan. He has that ability. Need to come up with serious skills and the application to apply and adjust here. 3 for 29. Oh, once again a good delivery. Turn and drift is on offer. What the batters can do. He's really troubling them. He's turning it on its head. He's got that turn and twist. That's the beauty of Yash Garg. Highest wicket taker in the tournament for a reason. And this surface has helped him a lot. As he has picked up 16 wickets. 14 earlier on, 2 in today's, makes it 16. Nasser works it away, scare on the on. Good shot there, nicely kept it away. And that's what you need to do. You have to rotate against Yash Garg when he's unplayable. When you're unable to offer any kind of a big shot within the power play,
one need to understand why he's being brought into the attack within the ball with a new ball in his hand. He's having those skills, serious skills, that batter is unable to understand him. Next one worked away nicely onto the onside. So rotation is the only weapon, as he's looked lethal with the ball. 3 overs. It's 2 for 9. Economic, excellent, and one that I call the fantabulous. It's just the beginning. We're done with the 6th one. Power play comes to an end. But look at Yash Garg and his figures. It's been impressive. Everyone is impressed around the center. 6 समाप्त 31 3 विकेट पे 3 विकेट पावर प्ले पे मिले रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को और सोपोर स्टैलियंस ने 3 गंवाए। अंकित नरवाल, अजीम काजी और उसके अलावा सुमित कुमार, ये 3 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं सोपोर स्टैलियंस के। आसिफ रमजान 1 पे, फयाज सरवर 11। और एक बार फिर पार्टनरशिप की आवश्यकता जो हम जिक्र कर रहे हैं, पर गेंद थमा दी है गौहर लैगी को। दोहरा स्पिन आक्रमण, अच्छी मानसिकता कप्तान की। आज आकिब भी टीम का हिस्सा है। यश गर्ग अब तक 16 विकेट प्राप्त कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में। पहले मुकाबले में 6, अगले मुकाबले में 6, फिर तीसरे मुकाबले में 2 और यहां 2 विकेट अपने 3 ओवर में। गौहर लैगी एक और बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज हैं। फयाज सरवर 11 पे, पर सरवर और उनके साथी आसिफ रमजान को एक दायित्व निभाना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपको विकेट को सुरक्षित रखना और उसके साथ साथ रन गति को भी गतिशील देना, गतिशीलता रखनी स्कोरबोर्ड को, ये जरूरी है। ऑफ स्टंप से बाहर आड़े बल्ले के साथ अंतिम समय में मुंह खोला था, तो तिरछे आड़े बल्ले के साथ कट किया जरूर था, पर उस ओर खिलाड़ी तैनात हैं जब तक वो गेंद को फील्ड करते। रन लेने का अवसर था जरूर, पर जैसे ही देखा फील्डर के पास गेंद, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। यहाँ एक सिंगल मिल जाएगा। उस ओर खिलाड़ी तैनात है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र दौड़ा, थोड़ा वाइडिश खिलाड़ी, 1 रन और दौड़ करके पूरा कर लिया। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। सोपोर स्टैलियंस टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत खराब रही, पहली गेंद पर सफलता मिली थी अंकित नरवाल की नाक को, और उसके फिर लगातार 3 विकेट उन्होंने गंवाए। 32 पे 3 रन गति पर थोड़ा अंकुश लगा जरूर है, पर उस अंकुश से बाहर निकलना है तो आपको रोटेशन जरूरी है। पीछे फील्डर तैनात हैं, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35 पे 3, 6.3 के बाद जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, ये एतमाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। ये आत्मविश्वास यहां चाहिए बल्लेबाजी में, इन 2 बल्लेबाजों को। आपकी क्षमता, आप उस क्षमता के अनुकूल बल्लेबाजी कीजिए। गेंदबाज को पढ़ना जरूरी, विकेट को पढ़ना जरूरी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी। पर यहां आदिल रेशी के पास सीधे गई गेंद और उन्होंने कैच लपक लिया। एक और विकेट का पतन। ये 33 पे 4था गंवाया 7वें ओवर में। और बात पार्टनरशिप की हो रही थी, पर पार्टनरशिप को तोड़ा यहां गौहर लैगी ने। आते ही सफल था, और सोपोर स्टैलियंस की टीम इस समय संकट की स्थिति में। यहां देख लीजिए, और खूबसूरत कैच, हर उछलते हुए वहां पर संतुलित बना करके ये कैच लपका और चलता किया वहां पर बल्लेबाज को। और अब नए बल्लेबाज परवेज रसूल, फयाज सरवर। और देखिए, पहले ही हमने जिक्र किया, इस विकेट को पढ़ना जरूरी है, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना जरूरी, परिस्थिति में आपको एडजस्ट करना, वो आपकी महानता है, पर वो चीज हुई नहीं। तैंतीस पे 4, 6.5 ओवर की गेंदबाजी। लैगी ने 2 रन देकर के सफलता अर्जित की अपने पहले ही ओवर में, और मात्र 2 रन खर्चे। दबाव इस समय साफ, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध, एंजॉय कर रहे हैं। और अभी भी दर्शक धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर। वो जो एंट्री गेट है एमिनिटी ब्लॉक 3, वहां से दर्शक
और उसके अलावा सेंट्रल टनल वहां से भी दर्शक प्रवेश कर रहे हैं, उनका आक्रमण हो रहा है। पर यहाँ ये वापसी का आक्रमण डगआउट की और सोपोर स्टैलियंस के बल्लेबाजों का। 33 पे 4 गवाए, 6.5 वो दिखे नहीं है उस रंग में। अब अंकित नरवाल को खिला रहे हैं। उसके अलावा देखिए शुरुआत अगर पिछले मुकाबले में अहमद उमर भांडे और फयाज सरवर ने वो अटैकिंग शुरुआत 6 ओवर में 85, और यहाँ आप अंकित नरवाल पिछले मुकाबले में कोई योगदान नहीं दे पाए, तो ये देखिए यहाँ पर रनआउट का अवसर हो सकता था। ये आपस का तालमेल जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। परवेज रसूल और आसिफ रमजान का अनुभवी अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव परवेज रसूल के पास। बात अंकित नरवाल की, दूसरे मुकाबले में खास योगदान नहीं दे पाए। सुमित कुमार को यहाँ आज जगह मिली और वो भी खास कुछ कर नहीं पाए। और उसके अलावा काजी ने 1-2 चौके लगाए, वो स्टार्ट बेहतर मिला, पर उस स्टार्ट को एक बड़ी पारी में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये आपकी मानसिकता जो उसको थोड़ा बदलना जरूरी है इस विकेट पे। और पिछले 16 मुकाबले इस विकेट पे हुए हैं। आपने मेरे सहयोगी ने जिक्र किया, वीडियो जरूर देखे होंगे। यश गर्ग के विरुद्ध आपको एक प्लानिंग के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करनी है, और फिर आप उसी प्रकार का स्ट्रोक खेल रहे हैं। तो शरीर से दूर खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन से दूर रह करके स्ट्रोक मारने का प्रयास। तो खमियाजा भुगता यहां पर सोपोर स्टालियन ने। पर गुडविल की तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी गेंदबाजों की। बेहतरीन गेंदबाजी, सही दिशा, सही लाइन और लेंथ के साथ यहां 33 पे 4, 7 की समाप्ति के बाद परवेज रसूल, आसिफ रमजान बीच मैदान। Flawless, great approach on by the bowling unit. They denied any freebie, and all the bowlers living up to their expectations. It has been a tremendous spell. 7 overs, 4 wickets down, just 33 runs given away. There is a man at long on. Now he's asked to stay a bit inside. Here is the fresh over. Weber Mali into the attack. Kept it away from left hand. Bowled it wide of the off. Trying to keep it away from that arc of the batter. Next one on the full. Driven handsomely. In the gap. Will he get to the ball? Can he cut it off? He does. Does well in the end. Gavalagi there. With that brace, there is addition to the tally. 35 for 4. Good stop in the end. Nicely done. Takes it on the full. Not letting the ball to pitch. And are they going to check? Looks like that he's going to ask the TV umpire to look into this one. Is it a fair ball? Is it a legal delivery? And this Balwinder Kumar Soni, the strike umpire right now, he's going to look into this one. Decision pending. Wait is on. Wait on, wait on. TV umpire will come up with the final call. It's 33 at the moment. It's fair ball declared by the TV umpire. He's okay there. No problem with the front foot there. Okay, fine. He's going to carry on and continue. 33 for the loss of 4. What's going on? Short pass continues in play. They're going to look into this one again. Balwinder Kumar Soni isn't satisfied. People are coming in good numbers. 2 evenly poised teams. Well, on paper you may be strong. And rightly said, on paper you may be strong. But what matters the most, how you apply on a given day. When you're given a task, an assignment, you have to come up with something special. But if we talk about the stats, then we have 2 big teams. Talent in its abundance, class, resilience, everything is in store for today's match, today's game. All the big names, they have their fan base across Jammu and Kashmir, including Ladakh. People love them. They're their beloved cricketers. Everyone has that international exposure. Pause in play. Nag needs some attention of physio there.
Now he's getting treatment, and you can enjoy the highlights how Yash Garg wreak havoc again with the ball. And keep watching. Go through this one again. It's resumption time in the middle. Weber Mali to continue. Keeps it away gently. They're going to look for the two here. Good running between the wickets. Little fumble there. And Parvez is so quick between the wickets. His fitness is telling the story. As he scamper through for the second one. That brings Asif Ramzan on strike again. On to 6 of 12. Batting with a strike rate of 50. Halfway mark in 8th over. That's a quality cover try again. Can't beat the captain there. Ishtiaq Rasool. Nag is unbeatable at times. Likewise there again. Stops the ball, which was travelling at a good pace. Weber Mali. Driven again in the same direction. Just wide of the fielder. And anything either side, you're going to find runs there. 38 for the loss of 4. This is 8th over wherein Weber Mali in his very first over. As of now, he has bowled really well. Keeping things tight. Gone for just 5 of his very first over. With a ball to come. Parvez Rasool on strike. Somebody walking in front up side screen is asked to walk away. Now Parvez Rasool will face the likes of Weber Mali here. What he's going to do. On strike. To face the likes of Weber Mali for the first time. Goes deep in crease, keeps it back along, not for runs. 8th gone. It's 38 for the loss of 4. Parvez yet to open his account. Asif Ramzan on 7 of 14. They are just trying to recover from early dent and damage, which was done by Yash Garg, Nag and Gavalagi. These are the bowlers who picked up wickets. Yash chipped in with 2. Nag and Gavalagi wicket apiece. And that is the story till over number 8. Just 38 put on board by Sopore Stallions. Brought in a great combination. Bringing in the likes of Sumit Kumar, Ankit Narwal, Fayaz Sarwar, Asif Ramzan, Parvez Rasool, Asif Rasool. It's a nice combination with different talent and character in the lineup. Here is Leggy again. Wide up the off. I think that's a good move to keep it away from Asif Ramzan. Anything in his zone, he's going to look for that mid-wicket zone. What we saw the night here. He gone all guns blazing. It was ball flying to every nook and corner of the field. And he targeted every side of the ground. This could be tight here. He saved no problem in the end. He makes it with ease in the end. It's 39 for the loss of 4. This is over number 9 we are in. As we watch Parvez Rasool again, who's going to face the likes of Gavalagi for the first time here. What will he do now? There is going to be little amount of pressure. And it's a tricky situation as they're 4 down. That is going to tell you. And you can see that. Now the first run for Parvez Rasool. Is he going to look back for the second? No way. He's going to settle with 1. He's going to content with 1. It's 40 for the loss of 4. He's off the mark after 3 balls. Finally, he's off the mark. And this time round, he lunges forward and gets to the pitch of the ball. Leggy to continue. This time punched by Asif Rasool. Asif Ramzan, sorry. Correction comes in. It's Asif Ramzan, not Asif Rasool. He's
Yet to bat, he's yet to walk in. It's 41 for the loss of 4. Good shot again. He punched it, generating that pace. And there was a lot of speed behind that one. And Asif Ramzan is known for these kind of shots. He can generate that kind of pace. Parvez Rasool drives that one in the gap. Chase for the man there. And he's back for the second with his good running. Keeps it away from that Yashgurk. In between that long off and extra cover. There is a big space. Just timing the ball to perfection there and find us the second with ease. 43 for 4. Technically sound. The best all-rounder. One of the best in the country. There is a shot for LBW and up goes the finger. Is given out to LBW. The captain is gone. I was just talking about the one of the best all-rounders in the country. Is gone in the form of wicket number 5. He's got plenty number of runs and wickets. He's gone here. He's LBW to Gabalagi. And this one, he knelt down on one knee, trying to sweep the ball, and he's walking. Accepted that call from umpire with grace, and he walks away. That brings Asif Rasool in at number 7. I was talking about that this lad has around 600 plus wickets in domestic cricket and has a good number of runs there, and is on his way back to pavilion. It's a big fish. It's a huge wicket. And Gabalagi is delighted. Their team is pumped up, getting rid of Parvez Rasool. Was trapped well in front. That brings Asif Rasool. There comes the man, the crisis man. What can he do this evening? His team is in desperate need of a partnership. In shallow waters, under the dark chant for a while. And Asif Rasool straight away into the hurdle of Royal Goodwill and telling them, stay away and tonight I'm going to teach you. What can I do with the bat? It's just like that. He's a funny customer. Oh, look, he's a jolly. And they all love him. "43 for 5. That brings the newcomer in at number 7. That's the brother of Parvez Rasool. It's Asif Rasool in now. Now Asif has to play part. Al Nazir, was that out or not? We can't talk about that. It's the good call from umpire nonetheless. So let's talk about the two men in the middle. It's up to now Asif Rasool and Asif Ramzan. At least show some decency and try to remain circumspect. Put on a show. Put premium on the wickets. And stick to basics. Look for ones, look for twos at times. You need to resurrect here. Resurrection is important now. 5 of the batters gone back, half their team. They lost their half side. And this is the 10th over. 10 overs are remaining. They're already 5 down here. Oh, look at that one. Just short of Weber Mali there. Wicketkeeper batter. Asif Ramzan. Under pump at the moment. That's another quality shot. But he's unable to find that gap. Pressure is mounting. Dot ball percentage is getting high and higher with every passing ball. Now Asif Rasool has asked the umpire, let me have a word with. They're going to check that no ball again, front foot. And umpire believes that Weber Mali is an okay there. Let's see. They're going to ask the TV umpire to look into this one. From this angle, looks okay right now. It's okay there again. It's a fair ball, so no problem at all. Second time, Balvendra Kumar asked the TV umpire to assist me. Help me out, bail me out. 5 for 43. Again, a good shot. Once again, unable to find the gap. Little fumble. That allowed a single. Now look at the Royals. They're trying to dry up singles. We're not talking about the boundaries. They're not thinking about the boundaries. They're drying up singles here. And that is making the life of batters tough. And at times it looks like it is, they're making the life a kind of a hell.
ये विकेट आ सकता है क्योंकि अब रनगति पे अंकुश लगा है, दबाव बढ़ेगा, कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाने जरूरी पड़ जाएंगे वहां पर सोपर स्टैलियंस के बल्लेबाजों को, तो फिर यहाँ विकेट भी मिल सकता है। और ये चीज जहन में रखनी होगी आसिफ रमजान और आसिफ रसूल को, क्योंकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना कम से कम जरूरी है। 44 पे 5, 9.4। वैभव माली एक स्लिप तैनात, इस बार आसिफ रसूल ठीक गेंद के पीछे आकर के सम्मान दिया वापस वैभव माली की और बगैर किसी रन के। 44 पे 5। सोपोर स्टैलियंस संकट की स्थिति में, नैया डूबती हुई नजर आ रही है, पर जहां से ये क्षमता इन दो बल्लेबाजों के पास बड़े स्ट्रोक खेलने की, एक बड़ी साझेदारी निभाने की, वो निभानी हो गई। लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ को फ्लिक किया, एक सिंगल के लिए आसिफ मंजूर तैनात, सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या पहुंच गई 45 पे, ओवर की हो गई समाप्ति, 10 समाप्त 45 बने, 4.50 प्रति ओवर के हिसाब से, पर 5 विकेट गंवाए सोपोर स्टैलियन ने 17वें मुकाबले में, जो इस समय दिन रात्रि का मुकाबला वर्तमान में चल रहा है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में, जहां एक तरफ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ सोपोर स्टैलियंस। जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और ऐसे में वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास दिखाना यहाँ जरूरी है। आसिफ रमजान 10-21 गेंदें खेल करके, और यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं दबाव में है, पर थोड़ा आत्मविश्वास के साथ थोड़ा सा समय ले रहे हैं। पर यहाँ देखना होगा कि आने वाले 10 ओवर में आप कितने रन बटोर पाएंगे, क्योंकि 5 विकेट आपने गंवाए। न सिर्फ पार्टनरशिप बल्कि स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देना जरूरी इस समय सोपोर स्टाइलियंस के बल्लेबाजों को। ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है, लौटेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। दस ओवर 45 ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 11वें की शुरुआत, आसिफ रमजान 10 पे सामने, आसिफ रसूल 1 पे। और आसिफ रसूल स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, आसिफ रमजान नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। और गवर्नर लेगी एक ओवर लेकर के, वैभव माली 2 ओवर 7 रन। आसिफ रसूल सामने, पहली गेंद लेगी की ऑफ साइड में, पर सीधे फील्डर के पास, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। दबाव में जरूर एक पार्टनरशिप के साथ साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी, क्योंकि रनगति पे अंकुश लगा हुआ है, वो विराम सा लग गया है, उस विराम को तोड़ना जरूरी है। और एक और बेहतर गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद, खूबसूरत गेंद, यहाँ पर पूरी तरह से बीट करते हुए आसिफ रसूल को गवर लगी 2 डॉट गेंदें। 45 पे 5, 10.2 ओवर की गेंदबाजी, 11वां ओवर। आसिफ रसूल ने 4 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया है। किसी भी बल्लेबाज द्वारा बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, वो पैड पे टकराई, अपील की जा रही है, पर रन दौड़ करके पूरा कर रहे हैं। 1 रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में। रन संख्या 45 से बढ़कर 46, 5 विकेट पे आधी टीम पवेलियन लौट चुकी। और यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी शुरुआत से ही दिखी है। अंकित नरवाल में शुरुआत में अपना विकेट गंवाया, उसके बाद फिर वो आत्मविश्वास दिखा नहीं, उस प्रकार की लय और ताल में टीम दिखी नहीं।
लगातार अंतर के बाद विकेट गंवाते गए और सोपोर स्टैलियंस इस समय 46 पे 5, 10.3 के बाद आसिफ रमजान सामने। हालांकि एक बेहतरीन जोड़ी बीच मैदान में, किस प्रकार से यहां से आगे बल्लेबाजी कर पाएगी, दबाव में जरूर है। तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं जब तक गेंद को फील्ड किया जाता संभवतः रूप बशीर द्वारा। दो बल्लेबाजों के पास समय था रन लेने का और यहाँ 2 अथवा 1 ही देखना होगा। 2 रन और खाते में, रन संख्या 48, 5 विकेट पे 10.4, 2 गेंदों का बाकी, 4वां ओवर। लेगी के इस ओवर में 3 रन अभी तक आए हैं 4 गेंदों से। आसिफ रमजान सामने की ओर खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव, सामने चौका मिलता हुआ और 50 भी पूरे होते। 10.5 के बाद ये 52 रन 5 विकेट पे। रन संख्या की अगर बात करें तो 52 रन बना लिया इस समय आसिफ रमजान सामने। एक संघर्ष चलता हुआ पर यहां पूरी तरह से अभी तक हावी गेंदबाजी आसिफ रमजान 16 पे। इस बार फिर खेला है, हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात मिड ऑन पे, उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया। मिड ऑन से यश गर्ग ने गेंद को फील्ड कर लिया। गर्ग वापस थ्रो करते समय था सिंगल लेने का। अंतिम गेंद पर रन, ओवर की समाप्ति 11 के बाद 53 पे 5। सोपोर स्टैलियंस जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का यह 17वां मुकाबला। कल 2 मुकाबले और फिर 22 को मात्र 1 मुकाबला। सोपोर स्टैलियंस और सुल्तान वारियर्स बारामूला के बीच शाम 6 बजे और फिर नॉकआउट स्टेज प्रारंभ होने जा रहा है जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन का। 52 पे 5 और 1 रन अंतिम गेंद पर, तो 53 पे 5 से 11 ओवर में आसिफ रमजान और आसिफ रसूल यहां से देख परख के बल्लेबाजी करनी, वो साझेदारी में सहयोग देना, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। उसके अलावा खराब गेंद को सही नसीहत, ऑफ स्टंप से बाहर थे, ड्राइव किया गेंद को, पीछे फील्डर रूप बशीर, और जब तक वे गेंद को फील्ड करते वाइडिश मिड ऑफ से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से क्षमा कीजिएगा, दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का अवसर। 54 पे 5, 12वें की शुरुआत। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के आसिफ रसूल के लिए, आसिफ रसूल बड़े आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे निकाला, ठीक गेंद के पीछे आकर के गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं। अच्छी मानसिकता इस बल्लेबाज की, क्योंकि जानते हैं इस विकेट पे स्पिन गेंदबाजों के प्रति थोड़ा आत्मविश्वास जरूरी है, थोड़ा सुरक्षात्मक अंदाज अपनाना जरूरी है। इस बार फिर गेंद के पिच तक पहुंचते हुए खेला जरूर, जब तक गेंद को मिड विकेट क्षेत्र से फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कुछ रन बटोरने का। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी जरूरी, बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता। और ये जो इस समय रणनीति है, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, एक एक रन से पारी को चल, ये जरूरी है, क्योंकि वैभव माली एक बेहतरीन गेंदबाज है और उनके विरुद्ध आपको अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक और सिंगल, जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल और खाते में। रन संख्या में वृद्धि, इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं। 57 पे 5, 12वां ओवर, 11.4 ओवर की गेंदबाजी, 57 बना लिए हैं। 2 के 2 का आना बाकी इस ओवर में। बख्शी स्टेडियम में ये पहली पारी 17वें मुकाबले की। वैभव आसिफ रमजान के लिए एक बार फिर तो शफल किया, ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ निकाला, पीछे फील्डर हैं गवर लेगी, ने गेंद को फील्ड तो कर लिया। जब तक मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास समय था सिंगल लेने का। 58 पे 5, अंतिम गेंद का आना बाकी। वैभव माली 2.5 ओवर, 12 रन, सफलता की तलाश आसिफ रसूल सामने। ये अच्छी रणनीति आसिफ रसूल की, ठीक गेंद के पीछे आकर के गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं और वो फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, सामने बल्लेबाज गेंदबाज की ओर, बैक थ्रू द बॉलर। अच्छी रणनीति, थोड़ा एडजस्ट होने का यहाँ प्रयास आसिफ रसूल का, क्योंकि जानते हैं विकेट ज़्यादा खोए हैं और 12 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है, अथवा ये गेंद का आना बाकी, ये देखना होगा। और 58 रन बने हैं, तो 8 ओवर अभी भी है, और अगर आप अगले 2-3 ओवर बेहतर तरीके से निकाल लेते हैं, और यहाँ थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है और फ्रंट बुल नो बॉल चेक की जा रही है। नो का इशारा, जी हाँ, नो बॉल का इशारा, वो फ्रंट बुट नो बॉल, और सामने पॉपिंग क्रीज, और ऐसे में नो का इशारा अंपायर का।
एक अतिरिक्त गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर टीम सोपोर स्टैलियंस को 59 पे 5। आखिरी गेंद हो गई वैभव माली की 2.5 ओवर 13 रन। उनकी गेंदबाजी विश्लेषण, अनुशासन, पैनापन, किफायतीपन, कसी हुई गेंदबाजी, पर विकेट नहीं मिला है आसिफ रसूल सामने। इस बार डाउन द ट्रैक निकले खूबसूरती के साथ, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये चौका मिलता हुआ, फ्री हिट थी, आपके पास लाइसेंस था, और खूबसूरती के साथ उस गेंद को निकाल दिया सीमा पार 4 रनों के लिए वैभव माली के विरुद्ध। कमाल का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर चौका मिलता हुआ, 4 और खाते में रन संख्या में वृद्धि। 12 ओवर की समाप्ति। गुलजार गुल्ली का भी आना बाकी है सोपोर स्टैलियंस की ओर से। आज उन्हें खेलने का अवसर मिला है। आपके पास बल्लेबाजी विकल्प हैं, पर शानदार प्रदर्शन करना जरूरी, आक्रमण करना जरूरी, गुलजार गुल्ली का आना भी जरूरी। पर आसिफ रसूल ने इस पिछली गेंद पर जो फ्री हिट थी, बेहतर तरीके से चौका बटोरा। 12 ओवर समाप्त, 63 5 विकेट पे। माली 3 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। 8 ओवर का खेल, 5 सुरक्षित। आसिफ रसूल और आसिफ रमजान बीच मैदान में। .48 balls remaining. Season campaigner, most experienced Asif Rasool is in the middle. He's got the left-hander Asif Ramzan, the wicketkeeper batter from Saffron Town of Valley. There was huge amount of pressure, to some extent released by Asif Ramzan and Asif Rasool. Asif contributed 19 and Asif Rasool on 9 of 10. Roof for the first time will bowl. This tournament earned him a name as Chadura Express. In the SAM tournament, he removed that Athwas India 11 captain Samad for Nantes in that first game of the tournament, the inaugural game. The first ball, that was well directed one. Captain is having a word. Little chat is going on. Captain and the team is sensing a comeback here. They want one badly at this very crucial juncture. They want to get rid of the partnership. Asif Ramzan, he's technically sound. He won't let it go easily. Just a single there. That means one more run added to the tally. 64 for 5. At one stage they were reeling. They were falling like pack of cards. Like that autumn downward in the middle. Now the past couple of overs, these two are trying to keep their respective ends in control, and they're just trying to contain. That's a good looking shot. Scare on the on. Well, singles they require at the moment, as they are going through that resurrection phase. Recovery is on. They're trying to repair the damage which was earlier done by Yash Garg in that power play. In those power play overs, we saw Yash Garg picking up 2 invaluable wickets. Gavalagi, Ishtiaq Rasool equally sporting from other end. 65 for 5. That's a good shot. In front of Scare. Fielder does well. Adil Wani is so quick. The agility he has. He's a wonderful cricketer from Medura Tral. Quickly onto the ball and keeps it down to 1. 66 for 5. Over number 13 we are in. As we watch once again, Roof in this over conceded 3 runs and a dot delivery. Crowd is coming in good numbers. People are still flowing into the stadium. The love for the game is increasing day by day. It's growing day by day. As we watch Roof again. Oh, wow, what a delivery. Bangered in shot. It climbs around that head high. It was better to put on a helmet. But Asif Rasool somehow managed to get outside the line of the ball. Look, that one. Oh,
It was surprising. Sweet chin music. And Asif Rasool telling Roof, that's the beauty. He's going to appreciate these things. And telling his partner that it kicked off the surface, it jumped. What can I do? It was unplayable. 66 for 5. Now he decided to take him on. Doesn't connect it properly. Punches his bat. It was a back of a length delivery. He was trying to take him on. Doesn't connect. He's annoyed. You can see that on his face. Shake off a head. He's having words with Arup Bashir. Look at the spectators, the audiences, the viewers. The love they developed for the game of cricket. That's visible on their faces right now. Little smile. Some of them excited. Some looking calm. There is the different story. Everyone has a story. And they're there resting. And all staying calm. That's the better part of it. Oh, there is a massive crowd on that portion. It's massive. It's huge crowd in on that portion. Coming in. Good numbers. Shuffle across. Trying to launch it. In the end, goes for the sweep shot. Just a single. Weber Mali is trying his level best. He's doing well at the moment, I think. The better part about this lad is he's getting little better than the batter. That is, he's keeping it away from the batter's arc. What can he do against a right-hander now? Asif Rasool is lucky there. Wicketkeeper unable to control that one. Will this trickle into the fence? He does well, Yash Garg. With ball, he's picked up 2. And on the field, look at that one. Cuts it off. And what could have been a boundary. And he limits the scoring down to 3. Saved 1 run. Each and every run will count. Every run is important. 5 wickets down, just 70 on the board. This is over number 14. Now the 2 batters in the middle, Asif Ramzan and Asif Rasool, they are just trying to break free now. They also feel that urgency of scoring runs. Just 6 overs remaining after this over. Weber will finish his quota. That's aerial, that's up, that's in the air. And will it roll past everyone? We'll have to wait and watch. Yash again. Yash does well. Asif Rasool running towards the danger end. He's okay there. He's fine. He's home. He's safe. He's back to the safety of crease. 73 for the loss of 5. Over number 14 we are in. And this over we saw a couple of threes coming. Trion. Ball number 2 and ball number 4. Where we saw Trion coming. 3 runs added on. Good shot again. Digs it out nicely. Back along the track. 74 for 5. Sopore Stallions brought in a great combination. Some of the big names in the lineup. Royals, they're enjoying their cricket. Their ride. They too have some of the big names from local cricket. And Weber Mali from outside state with Yashgar coming from UP. Stays touch low again. One thing I can't understand. Weber Mali adjusted to the conditions. He bowled wide of the off. And Asif Ramzan, unable to understand. He's keeping it away from the batter's arc. Now they're talking about that, I think, wide delivery. Ali shuffle across. He did shuffle a little bit across. And Zur Saab, thank you very much. He's in the Royals dugout today. Coming from Handwara's beautiful area, which is the Havan's land piece. That is a Rajwar area. Thank you very much for letting me know that you are here. He's the part and parcel of Royals army. Nowadays, he's the part of that family. Well, it is 74 for 5 after 14 overs. 6 overs are going to come. 36 balls remaining. Sopore Stallions
will have to fight it out here as they have 2 points under their belt. 3 games to go. This is their second one. And after this, 2 remaining. 2 coming up. 4 overs. Wicketless but 25 effective. Weber Mali. Roo begins the fresher first ball. Wide signaled. Trying to chase it down. It was far away from the batter's arc. Asif Rasool will be eyeing some runs here. It was better to put on a helmet we saw in the last over from Roof. The one that it went past ear on that occasion. So it was better to put on a helmet. He's a tall, lanky, no doubt about that. And we have seen that odd one is kicking. It hurries. And batters have hardly time to respond. That's a quality flick shot. Protection is there. Adil Wani just a single. Asif Ramzan. Can he replicate? Will he do the same what he did yesterday here to entertain the crowd? Yesterday there were quite a few, but today there is a huge crowd in. And they will be eyeing some of the cracking shots. That's a good shot. That is a wonderful shot. Wonder aside for everyone here. That one. Canister through. What a shot. Beats at the gap on offside. Wow. Delightful. Timing. Placement. Footwork. Everything is there. And Gully is trying to stop it beyond the boundary line. He's padded up. Maybe next. 80 for 5. Asif Ramzan on to 29 of 34 balls. Asif Rasool telling him, stay cool. Control your nerves. Show calmness. Stay calm out there. As we require runs. We are not done yet. We have 5 overs and 4 balls to face. 80 for 5. The next one is here. That's Apish and Ariel. Is he safe? He's okay. He's fine there. Was eyeing another boundary. But there is Weber Mali. So quick on the outfield. Just a single. 81 for 5. 81 5 विकेट पे। और ये पार्टनरशिप आसिफ रसूल और आसिफ रमजान द्वारा बेहतर होती चली जा रही है। पर अंत तक ले जाएं इस साझेदारी को। और आने वाले 4-5 ओवर जो हैं उनमें और रन गति को बढ़ावा दे, रन गति को गतिशीलता दे, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता दे। कम से कम 150-160 अवश्य करें क्योंकि इस विकेट पे 170-180 जो है वो न्यूनतम लक्ष्य माना जाता है। पर कोशिश जरूर होगी। अभी भी आपके पास समय है क्योंकि इस ओवर के बाद 5 ओवर का आना बाकी। और 150-160 अवश्य इस विकेट पे। इस पर जगह बना करके स्ट्रोक खेला पर पीछे तैनात हैं खिलाड़ी। उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया पर रन जरूर मिला यहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 82 पे 5, 14.4 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ रमजान 30 और आसिफ रसूल 16-17 गेंदों से। ये पार्टनरशिप बहुत ही बेहतर। इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं एक प्रयास जरूर किया है एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने का सोपोर स्टैलियंस के लिए। स्टंप्स पे ये गेंद खेला जरूर दौड़ पड़े थे रन के लिए पर आसिफ रसूल ने मना किया कि अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है और इस समय रिस्क उठाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सोपोर स्टैलियंस की टीम पहले से ही दबाव में है। 15 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं। 82 स्कोरबोर्ड पे 5 विकेट गंवाए हैं। रॉयल गुडविल को एक और विकेट चाहिए और पूरी तरह से परिस्थितियां उनके कंट्रोल में क्योंकि ज्यादा रन बने नहीं है। 5.53 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं सुपर स्टैलियंस ने। 1 रन पूरा किया तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग और यहां दूसरा रन भी पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतर आसिफ रसूल और आसिफ रमजान द्वारा। 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 मिले अंतिम गेंद पर। ओवर समाप्त हुआ, 15 समाप्त। 84 पे 5 ओवर का खेल पहली पारी में। आसिफ रसूल और आसिफ रमजान दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर करेंगे कि अंतिम 5 ओवर में 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो फिर 60 और 140-145 तक
10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 50, तो फिर आप 130 135 के आसपास। वो कोशिश जरूरी है, वो प्रयास जरूरी है यहां से, और कम से कम 150 तक पहुंचना अवश्य है, क्योंकि रॉयल गुडविल के पास बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई है। ये क्रिकेट महान चिंताओं का अकेले कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। पर जिस प्रकार का वो फॉर्म चल रहा है बल्लेबाजों का, इश्तियाक रसूल, उसके अलावा नासिर कुमार, आदिल ऋषि, वाहिद तेली, आसिफ मंजूर, आदिल वानी, यश गर्ग अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और एक और अन्य बल्लेबाज, इवन के गोवर लेगी भी अच्छी बल्लेबाजी कर ले। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं बल्लेबाजी में। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ एक सम्मानजनक लक्ष्य तक तो पहुंचना अवश्य। सोपोर स्टैलियंस को 84 पे 5-15 के बाद 16वें की शुरुआत, गोवर लेगी 3 ओवर 15 रन 2 विकेट। सफल बॉलर अब तक रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के। आखिरी ओवर अपने कोटे का, एक बल्लेबाज को अब सामने से प्रहार करने जरूरी है, और अतिरिक्त जोखिम अब यहां से उठाने जरूरी है, क्योंकि मात्र 5 ओवर का खेल बचा है। 84 पे 5-15 के बाद 5.60 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। नए ओवर की शुरुआत, रिवर्स स्वीप पर सीधे फील्डर के पास, और आदिल ऋषि ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। पहली गेंद डॉट, 15.1। लेगी के विरुद्ध प्रहार करना, और कोशिश जरूर होगी आसिफ रसूल की बड़े शॉट के लिए जाएं। इस पर डाउन द ट्रैक निकले जरूर खूबसूरती के साथ, पर पीछे आसिफ मंजूर तैनात हैं। केवल सिंगल मिलेगा। रन गति पे अंकुश थोड़ा लगा जरूर है, पर कोशिश जरूर अब दोनों बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि गौहर लेगी ने अब तक ज्यादा रन खर्चे नहीं है, क्योंकि चौथे ओवर में अपने कोटे के वो आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, और मात्र 16 रन दिए हैं, 2 विकेट प्राप्त किए। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। भारी मात्रा में दर्शक, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध इस दिन रात्रि के मुकाबले में। ये 17वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहां पर भी वो कॉन्फिडेंस दिखा जरूर है अब इस साझेदारी के चलते, पर बेहतर तरीके से इस पारी को फिनिश करना, तो वो बड़ी उपलब्धि होगी। लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, सिंगल मिल जाएगा यहां पर एक और। लेग बाई का इशारा अंपायर बलविंद्र कुमार का। अभी तक इस ओवर में 2 ही रन आए मात्र 3 गेंदों से, वो विराम लगातार। पर आसिफ रसूल सामने 17 पे, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे इस गेंद पे। फिर रिवर्स स्वीप, और फिर सफलता मिली नहीं। रन जरूर मिला एक, वो कनेक्शन नहीं मिला। 1 रन और खाते में, रन संख्या 87। बहुत ही बेहतरीन ओवर, 2 बाइज और 1 सिंगल, 3 रन आए हैं इस ओवर में, और 2 गेंदें बची हैं। आसिफ रमजान 32 पे, आसिफ रसूल 17 पे, 87 पे 5 लेगी। यहां कनेक्शन, पीछे कुमार है, एक टिप्पे के बाद उनके पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई वापस गौहर लेगी के पास, और इसी बीच एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और सिंगल, तो 5 से 4 आए हैं। एक और बढ़िया ओवर, एक और बेहतर ओवर, एक से ठीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, चतुरता के साथ, चतुराई के साथ गेंदबाजी। कुछ बड़ा करना होगा इस गेंद पे। लेग साइड में वाइड का इशारा, दिशा और लंबाई में नियंत्रण नहीं। अतिरिक्त के साथ ही रन संख्या 89, 5 विकेट में 15.5 के बाद ये 16वां ओवर। सोपोर स्टैलियंस की टीम दबाव में जरूर, रन आ नहीं रहे हैं। इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले, खूबसूरती के साथ उसको उड़ाया, पर पीछे आदिल वानी को पाया, तो केवल 1 रन जरूर मिला। अंतिम गेंद पर रन ओवर से आए 6 ओवर, कोटा समाप्त। 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 19 रन 2 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी, 16 के बाद 90 पे 5, 33 आसिफ रमजान, आसिफ रसूल 18-21 गेंदों से, और प्रोजेक्टेड स्कोर 113। अगले 4 ओवर में 40, तो फिर 130 तक पहुंच पाएगी। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन बनाने हैं। कहां पहुंच पाएगी टीम, ये देखना होगा।
काफी भारी मात्रा में यहाँ पे दर्शक उपलब्ध और एक अच्छा मुकाबला, पर सोपोर स्टैलियंस की टीम कहां तक पहुंच पाएगी, क्या लक्ष्य रहेगा रॉयल गुडविल के सामने 17वें मुकाबले में, यह देखना होगा कि 16 ओवर में मात्र 90 रन बने हैं, 5 विकेट गंवाए हैं आसिफ रसूल और आसिफ रमजान। भारी मात्रा में दर्शक, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए इस मैदान में, बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान। 90 पे 5, 16 के बाद 17वें की शुरुआत होने जा रही है। आसिफ रसूल 18 पे सामने, 4 मात्र ओवर का खेल बचा है। पहली गेंद लेकर के गर्ग का इस्तेमाल, इस बार शफल की लेग साइड में रूम बना करके स्ट्रोक खेला, एक सिंगल पूरा किया, दूसरे की मांग थी, आसिफ रमजान ने मना किया। 1 रन और खाते में, 91, 16.1 ओवर की गेंदबाजी, 17वां ओवर, पहली पारी। अब धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर अग्रसर ये पहली पारी। यश गर्ग का यह आखिरी ओवर, 3.1 ओवर, 10 रन 2 विकेट। एक और बेहतरीन स्पेल रहा और यह बेहतरीन कोटा पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मात्र 10 रन खर्चे उन्होंने 3.1 ओवर में, 2 विकेट भी। कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अब तक उनके नाम 16 विकेट आ चुके हैं। पहले मुकाबले में 6 अथवास इंडिया के विरुद्ध, और दूसरे मुकाबले में सुल्तान के विरुद्ध 6, फिर अगले मुकाबले में स्पेक्ट्रम्स के विरुद्ध उन्होंने 2। इस बार बड़ा स्ट्रोक आसिफ रमजान के बल्ले से, कनेक्शन सही और दर्शक बीरगांव में जाकर के गेंद लगी है। कमाल का स्ट्रोक, आवश्यकता भी थी इस छक्के की, और आसिफ रमजान के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का। 39 उनकी व्यक्तिगत रन संख्या, 40 गेंदों से, और कुल रन संख्या 97, 5 विकेट पे, और खूबसूरती के साथ मिडिल ऑफ द बैट से सही कनेक्शन, ऊर्जा का संचार, और गेंद मैदान से बाहर। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन था। 6 रन मिलते हुए आसिफ रमजान को। आसिफ रमजान में क्षमता है, आसिफ रसूल में क्षमता है, और यहां आप इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता, क्योंकि एक छोर से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी जरूरी है, यहां आपको प्रहार करने जरूरी है, क्योंकि 17वां ओवर इसमें चल रहा है, 97 पे 5, और कोशिश एक विकेट की दूसरे छोर से। यशगर को इसीलिए बुलाया गया है गेंदबाजी में, इस साझेदारी को तोड़ा जाए। एक और अच्छा स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया और केवल 1 ही रन मिलेगा, और इस ओवर में अब तक 3 गेंदों से 8 रन आ चुके हैं। इस ओवर को बड़ा करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 98 पे 5, 16.3, 17वां ओवर। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025, बख्शी स्टेडियम वेन्यू, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 98 पे 5 सोपोर स्टालियंस पहली पारी के आधार पर। फिर लेग साइड में वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में, 99 पे 5। आसिफ रसूल बड़े स्ट्रोक तलाश रहे हैं, पर वो गेंद ठीक तरीके से अभी तक बल्ले पे आ नहीं रहे हैं। पर आसिफ रमजान ने पिछली गेंद पर वो छक्का लगाया था, और उस छक्के से उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। 98 अथवा 99 सोपोर स्टैलियंस 17वें ओवर में नॉट आउट करार दिए गए। हालांकि पिछला पांव सुरक्षित क्रीज में था और ऐसे में कोई क्षति नहीं, रनगति में कोई वृद्धि। 99 पे 5, 16.3। 17वां ओवर, 19 आसिफ रसूल, आसिफ रमजान 40। पर यहां महत्वता कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने की, आक्रमण करने की, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने की। यश गर्ग आसिफ रसूल के लिए एक बार फिर ऑफ साइड में, सीधे फील्डर के पास रन नहीं मिलेगा, पर यहां ओवरथ्रो के रूप में अब जाकर के यह रन मिलता हुआ। एक और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए सोपोर स्टैलियंस के। 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये 100 रन पूरे हुए हैं, 5 विकेट पे सोपोर स्टैलियंस के। और यश गर्ग 3.4 ओवर, 19 रन 2 विकेट। इस ओवर में थोड़े रन जरूर उनके विरुद्ध आए हैं, 3 सिंगल 1 वाइड और 1 छक्का, तो 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 2 गेंदें बची है ओवर की। आसिफ रमजान सामने 40 पे, 100 पे 5। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक हवाई यात्रा पे, और गेंद सीधे स्टैंड्स में। आसिफ रमजान के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, और यश गर्ग के विरुद्ध ये दूसरा छक्का इस ओवर में। 46 पर पहुंच गए 42 गेंदों से आसिफ रमजान, और पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन पारी खेली थी, और इस मुकाबले में जब टीम को आवश्यकता थी, ये देख लीजिए खूबसूरती के साथ उड़ाया गेंद को और सीधे स्टैंड्स में पहुंचाया। 106, 5 विकेट पे अंतिम गेंद इस ओवर की। ये बड़ा ओवर बोल्ड कर दिया, लेग स्टंप पर गेंद पूरी तरह से वहां
आस्ते हुए वास्ते और गेंद सीधे स्टंप्स पे. पिछली गेंद पर छक्का और उससे अगली गेंद पर हिसाब चुकता कर दिया यश गर्ग ने. बोल्ड कर दिया यहां आसिफ रमजान को, या एक बार फिर रिप्लेस के माध्यम से. और लेग स्टंप को थोड़ा एक्सपोज जरूर किया था. लेग साइड में मारना चाहते थे पर गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सीधे स्टंप्स पे. यहां विकेट मिलता हुआ. छठा ओवर की समाप्ति. 17 समाप्त. 106. 6 विकेट पे सोपोर स्टैलियंस. Bowled round legs by Yash Garg. He removed Asif Ramzan on 46. Big one, and has bowled him out here. Lukaki Mir, pat on his head. He knows that how important and how crucial these 46 runs are going to be with the passage of time. 106 for 6, 17 done. He exposed the leg stick and the leg stump there. The attendance is amazing again. The love for the game. Someone has put on that mask. You can see that. He's looking calm there. Look. Has put on a mask on his face. A masked one there. Sitting within the crowd. These are the visuals. These are the pictures coming on your screen right now. Enjoy and have fun. Short pause in play. We saw the back of Asif Ramzan. Cracking knock. The one who kept bowlers thinking time and again. Scoring 46 invaluable. A knock that given Sopore Stallions a chance to be back into this game. It will be early to say, it will be immature to say that they will run away with the game, but to some extent, given their bowlers extra bit of cushion and something to bowl at, bat is going through that gauge. Has it passed the test? Yes, it has. 106 for 6. 18 balls are going to come. Yash Garg is done with his quota of 4 overs, 3 for 25. Brilliant 4 overs again. 3 wickets in today's game makes it 17 out of 4. He has picked up 17. He is the purple cap owner. That is very much in control now. It's hard to touch that mark of 17. But others do have a chance to be there. But the way this lad has picked up 6, 6, then a brace. Couple of wickets in today's. He has picked up Trion. Overall 17 out of 4 matches. Roof will bowl from Southern Pavilion End. He started from Northern Pavilion End. Up the hill he's going to bowl now. 106 for 6. Asif doesn't time it properly. Call is for 2. He's going to push for the second. This could be tied. Direct hit needed. Oh, it's a direct hit. Look at that. And Gulzar Guli is well short of his ground there. And Asif Rasool, you can see that he is disgusted. Why not? It's a bizarre kind of a way. He sold Gulzar Guli there. And Guli sacrificed his wicket. So no more Guli heroics today. He's on his way back to Pavilion. Look at Rob Bashir, Chadura Express. Now comes up with that pinpoint accurate try. Look, he scared up his body. That's what you need to do. And up goes the finger. He's well short of his ground. He wasn't even in the frame. So that's why he's given out as run out. Short pause in play. 107 for 7. Newman walks in. Guli gone for naught. He's run out here. There was an opportunity, but that's gone begging. As his partner ran him out there while trying to pitch that second run, which wasn't available. 107 on the board. It should be 108. 107, I think, one run added. The second one, we saw the back of Guli there. That brings Mujtaba Yusuf in at number 9. 17 important balls. They need at least 30 plus. Around 30 will make it 137, 140 will make it a good contest. Are they going to look for 130 here? Asif Rasool. Little smile. Is getting ready to face the next one from Roof Bashir. The boundary riders are all set. Long on in place. Mid off is up inside. Will Asif keep that thing in mind? That's a good shot. Punched. Fumble by Adil Rishi. And captain is there to cover it up. Are they going to look for third?
Asif says, wait on, 109 for 7. Brace for Asif Rasool there as he punched it nicely. Gets this one past Adil Rishi there. 109 for 7. Over number 18. 16 balls remaining. Stallions need runs. Hardly matters how they come. Royals are enjoying. They are in control at the moment. They won't let that momentum shift other way. What will happen? What can Asif do now? Again a quality shot. Sked driven. There is Ishtiyaq Rasool and it is an easy one to beat. And he's going to take control. So does he. Just a single. 110 on the board. 20 more needed to make it to 130. 15 balls are going to come. 2 overs and 3 balls. Crowd is excited. Can Mushtaba and Asif Rasool put on a show at the fair again? Oh, they're checking the no ball. Is it a no ball? TV umpire is asked to assist and help. They're checking on screen. $110 for the loss of 7. I think they're going to look into this one again and 110 on the board. Is it going to be a fair ball? Is it going to be a legal one or a no ball? We'll have to wait and watch. Umpire Balbindra Kumar Soni is looking into this one here. And it's a fair ball again. It's a fair ball again. He's okay with that there. And there was something in contact with the crease. Good one, a good call. 110 for 7. Here is Roof again. This time that's a good shot. Pulled. Is it going to go all the way? Yes, it does. That's 6 more. It gone flat over scare leg. Much needed 6 for Mushtaba and team. And that one he waited for the ball. And it climbs around the trip cage. Oh, look at that shot. Little imbalance, but Mushtaba gets 6 for that. He swung his bat without any fear. He decided that I need to go hard at it. He decided to go at it. With that 6, it's 116. And this over, we're seeing 9 runs coming of 5 balls. One last time in this over. Overall, 13 balls are going to come. Roof again. Roof to continue. Oh, that is a clean bowled. That one packs back in. Stump is uprooted from the ground. Mushtaba is gone. He's walking back to pavilion. Wicket number 8 down here. And Roof is delighted. One more for Roof here. Oh, look at that one. Sent to that wicket, caught wheeling. It's wicket number 8 down. That brings number 10 in place of Mushtaba Yusuf. As Mushtaba is gone, that brings, I think it's Uwais Baba in at number 10. Mushtaba could only manage 6 with a strike rate of 300. He used 2 balls. One gone for 6. Another one, we saw the back of Mushtaba there. एक सौ 17 पे 8. मुजतबा यूसुफ साहब बोल्ड हुए रू बशीर की गेंद पर और इस ओवर में 2 विकेट आए. एक रनआउट के रूप में गुलजार गुली और अब जाकर के बोल्ड किया मुजतबा को रू बशीर ने. 117 पे 8. 17.5. आसिफ रसूल अभी भी अभिजीत हैं 24 पे 26 गेंदों से और उनके साथ अब उवैस बाबा नए बल्लेबाज. और देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी सोपोर स्टैलियंस की टीम क्योंकि पूरी तरह से यहां गेंदबाजी हावी और 117 तक सीमित रखा है. 17.5 में 8 विकेट पे. प्रोजेक्टेड स्कोर 131. रू बशीर आखिरी गेंद लेकर के ओवर के. और एक और अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए उछाल को, उस गति को. उवैस बाबा अंतिम गेंद पर रन नहीं. ओवर की समाप्ति. 18 समाप्त. 117.
8 विकेट पे सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। और काफी ज्यादा उछाल, और ऐसे में उस उछाल को पढ़ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, और ऐसे में 18 ओवर समाप्ति, 117 8 विकेट पे ओवेस बाबा 0, आसिफ रसूल 24-26 गेंदों से। अंतिम 2 ओवर्स का आना बाकी, आखिरी 12 गेंदें बची हैं, और क्या यहां 130-140 तक पहुंच पाएगी टीम, ये देखना होगा। तो एक समय में लग रहा था कि शायद 130 140 150 तक पर गुलजार घुली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट। फिर मोहितबा यूसुफ ने एक छक्का जरूर लगाया था, पर वो भी चलते बने। आखिरी 2 गेंदें, 2 ओवर, क्षमा कीजिएगा, आखिरी 2 ओवर का खेल। रूपशी 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। निश्चित तौर पे आखिरी ओवर उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी। इश्तियाक रसूल का यह आखिरी ओवर होगा अपने कोटे का, और पारी का 19वां, और फिर आखिरी ओवर अपने कोटे का संभवतः रूप बशीर करेंगे, और वो आखिरी ओवर होगा पारी का। फिलहाल 19वें की शुरुआत, 18 के बाद 117। पहली गेंद धीमी गति की गेंद, ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रहती हुई सरकती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर वाहिद तेली के पास बगैर किसी रन के। आसिफ रसूल भी वहां चौकन्ने, और वो भी पढ़ नहीं पाए कि पढ़ने के बाद गेंद नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ शुरुआत 18.1, 117 8 विकेट पे सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। और अब एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इन 2 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास होगा। आसिफ रसूल सामने, इश्तियाक रसूल के अंदरूनी बाल लगा, विकेट कीपर से गेंद चिटकी, पीछे जा रही है, पर फील्डर उस ओर क्या रोक पाएंगे अथवा नहीं, जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ उपहार के रूप में, 4 और खाते में सोपोर स्टैलियंस के, 4 आसिफ रसूल के खाते में। डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे स्टेप आउट करके, पर वहां वाहिद तेली से चूक हुई। हालांकि आसिफ मंजूर ने प्रयास किया था, पर गेंद की गति उनसे काफी तेज थी, और ये 4 रन और मिलते हुए इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि 121 संभवते 8 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 121 पे 8, 18.2। 10 गेंदें मात्र बची हैं इस पारी में। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 121 जे के स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जे के यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 121 पे 8। इश्तियाक रसूल अपने इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, 24 रन देकर के 1 विकेट 3.2 में। सामने आसिफ रसूल, अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक से कुछ नहीं है क्योंकि पढ़ने के बाद उतना ज्यादा उछाल था नहीं, तो ठीक तरीके से उस गेंद को पढ़ नहीं पाया आसिफ रसूल, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। एक और डॉट, 3 गेंदों से 4 रन आए ओवर में। 18.3, 121 8 विकेट पे सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। यहां कनेक्शन मिल गया, पर पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, केवल 1 रन मिलेगा। एक और खाते में 122 पे 8, 18.4 ओवर। आसिफ रसूल 29, ओवेस बाबा अब सामने जिन्हें खाता खोलना है। 30 गेंदों से 29 रन आसिफ रसूल ने बनाए हैं। 122 पे 8, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में। ओवेस बाबा सामने, कोशिश जरूर होगी एक सिंगल लेकर के आसिफ रसूल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक, क्योंकि वो अनुभवी खिलाड़ी है, वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, वो कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ आसिफ रसूल नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, इश्तियाक रसूल बाबा के लिए अच्छी रणनीति, सामने की ओर खेल करके रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में। 123 पे 8, 18.5। अंतिम गेंद का ना बाकी, और सामने रहेंगे स्ट्राइक पे आसिफ रसूल जो कि 29 पे नाबाद हैं। 30 गेंदों से 123 8 विकेट पे 18.5। अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में, और उसके बाद फिर पहली पारी का आखिरी ओवर संभवतः रूप बशीर करेंगे। इश्तियाक रसूल ने भी अच्छा अभी तक अपना ये स्पेल डाला है। 4 ओवर्स का कोटा समाप्त करने जा रहे हैं। 3.5 में 26 से 1 विकेट। आखिरी गेंद पर एक सिंगल मिल जाएगा, यहां रन आउट। जी हां, आसिफ रसूल रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जाएंगे। अंतिम गेंद पर रन आउट के रूप में विकेट रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को मिलता हुआ। 123 पे 9, 19 समाप्त। आखिरी जोड़ी और आखिरी ओवर। He wanted to keep that strike and was caught short of his ground, so he's run out there, and Baba will need to take that responsibility in the final over to finish beyond 130s. It's a big run out, wasn't even in the frame. Adilwan and Ishtiaq Rasool there, who assisted each other while getting rid of Asif Rasool. Zishan Zuhur comes in now. He walks in at number 11.
1, 2, 3 is what they have on the board at the moment. You can see that Adil Wan and Ishtiyaq Rasool. These are the two guys. It was Adil Wani who assisted, and Ishtiyaq was there to whiff off the bails. The final over, 6 balls. On strike is going to be OS Baba. One final touch and finish they require. Are we in for a couple of punches here? What can he do in the final over? Baba got Zishan Zahoor, the other batter. Roof is getting ready to operate in the final over. Nadil Wani is telling him that take care of your front foot. You overstepped in that over number 17. You have to take care of your front foot here. He is coming up with the final over here of inning number 1. 1, 2, 3 for 9. Excited crowd. It's buzz around the center. And little music in the background. It is little disturbing at times. 19 overs gone. 1, 2, 3 for 9. Final over. Zishan will remain on strike. Baba is telling Zishan, just hand me strike. Roop goes. First one is right on money. No run there. Good delivery to start with. There is other issues. Quickly onto the ball, and Zishan, he kept it away onto the offside, and Baba told him that just hand me strike. So he has to dab it. He has to pat it on offside, on either onto the onside to look for one. What he's going to do now. First one that was right on money, and he was unable to offer the shot. Ball number 2 from Roof Bashir. This time in the gap, but there is a man who's quickly onto the ball again. No run taken. Weber Mali all smiles as he denied that possibility of a single. Baba is telling him, keep it either side of the fielder. I will try to gain that strike here. Will he be able to be on strike? 2 balls. Baba is stranded on the other end. 1, 2, 3 for 9. Roop goes again. Zishan need to find a way. And he's clean bowled. And Sopore Stallions finish on 1, 2, 3, 1, 2, 3 for 10. That means the bundle are out on 123. 124 is going to be the target for Royal Goodwill, who won their 3 straight games. And this is going to be the game number 4. Let's see what they will do in inning number 2. We shall be back with the chase in a while from now. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum. The two openers for Royals are out in the middle. They stride out to the center. Ishtiyaq Rasool and he's got Nasir Kumar Bashir. This is the opening pair for Royal Goodwill this evening. 124 to get from 20 overs. And this pair is known for cracking cricket. Can they break free straight away? And Nag is known for some of the cracking shots straight away. What will happen? We are here to tell you the pros and cons. The entire story will be coming your way. In a while from now, I am Munawar and I got Sheikh Nazir in the com box. 124 is the chase. Sumit Kumar is having a word with Asif Rasool there. Asif, the experienced lad. Mujtaba is warming up straight away. He's measuring his run up. The two officials, Balwinder Kumar and Ravi Kumar Chaurasia, they're also out to the center. It's a huge attendance this evening here. And Arjun Rafiq using that energy, but is unable to attract the other side of the pot. Look at that side there, which is filled, it is jam-packed. 124 to get. The dazzling opening stand. The two wonderful openers, known for dazzling cricket, tremendous approach, hard-hitting approach. What they will do in today's game this evening. Look at the spectators. They're loving, some of them waving their hands, some getting off their seats all of a sudden, on their toes. And all are loving to be on screen. That's why they're showing that excitement. Most of them waving their hands, telling cameraman, thank you very much. Is it going to be another crackerjack of a start at the beginning, at the start of the inning number 2? What they will do with the bat. Mujtaba warming up on the other side. He's having few words with OS Baba. Ankit Narwal, failure today for Sopore Stallions yet again. Server having a word with Nasir Kumar. Kumar says, okay, don't worry. Mujtaba is getting ready to operate from Southern Pavilion, and there is little adjustment going on, and umpire is having a word with Asif Rasool there. As Mujtaba Yusuf is getting ready, he has that exposure. He has played across India. He has been the net bowler, and he's getting ready to operate. Mujtaba Yusuf, known for pace. We can call him Bij Bihara Express for a reason. It's over number 1. We are going to be in. Parvez Rasool, the captain upside, is having a word with Mujtaba. He has played a lot of cricket alongside Parvez Rasool. And under the leadership of Parvez, Mujtaba trained himself, polished himself. Mujtaba wants some changes on the field there. It won't be easy to control and contain Nag-like batter. He's a pace lover. Talking that bat speed, the eyesight, the connection. That is enormous at times. Little adjustment is being done in the field. He's designing that field, manipulating the field on either side. One is going to be square on the on. The one man at wide mid-on area. Now something is going on. I think he wants fine leg and square leg. He wants mid-wicket and backward of square. There is Shaukat, our cameraman. Right now he's pretty busy. He's trying to fix his camera over there, which is visible on our screen and your screens right now. As Mujtaba is warming up a bit, he's getting ready to operate. 124 to get from 20 overs. A required rate is going to be 6.20. And Balwinder Kumar says, let's play. Here we go. It's game on. First ball of the chase. As Mujtaba goes down the leg side. Not a good start to an innings. Bad line. Wide signal. 5 wides. Mujtaba bowled it way down the leg side. Far too down leg. Asif Ramzan can't stop that one. Would have been absolute blinder. But look at Asif Ramzan where he is. And how come he put in that kind of a full length dive? That much wasn't easy to cover up. So starts with 5 wides.
119 behind. Bad delivery to start with. And Nag is so strong. That's why there is going to be mid-wicket and square leg. Backward of square in place. He's so strong around those legs. He's going to flick it. 5 for none. Royals are underway. They won 3 on the trot. They have 6 points against their name under the belt. They are the table toppers from Group A. In the meantime, here is Mushtaba again. And Nag flicks that one. That's gone fine. Runs, 4 of them. He is so strong there. And he is also bowling on that line. Won't be easy to stop the flow of the bat. He's so quick there. The bat speed, I earlier mentioned that. It won't be easy to contain Nag when you bowl that kind of a delivery. Look how quick he is. The adjustment, it's electric quick. And the outfield is taking care of the rest in style. That's 4. It's 9 for none. Mushtaba need to mend his lines. He has to be right on money. He has to keep it wide of the off or off and middle area or middle and off. Here comes Mushtaba again. 9 without loss. Nag opened his account with a boundary. Beautiful delivery. Beautifully bowled. Ajeshwan is going to run down to the third man. But that's the beauty of bowler. It is a genuine edge there. And Nag not keeping it down, knowing that there isn't anyone in the slip corner. But that's the beauty of Mushtaba, who found that edge. Should have been slip in place for at least 1 or 2 overs. Look, he guided it. Deliberate one with angle blade, knowing there isn't anyone in slip cordon. Would have been interesting to watch had slip been in place, but there wasn't anyone in the slip cordon. On to 13 now, into the double figures. Royal Goodwill, Nag on to 8. 2 boundaries coming. 1 down to the backward of square. The next one guided nicely, deliberate and delicate. 13 for none. As we watch Mushtaba again. Mushtaba is running in hard, but he's unable to put pressure on Nag. And this one, Nag swings in his own style. Couple of bounces into the wide mid-on boundary. And look at the fans of Royals there. They're looking cool and calm at the moment. This is 3rd boundary. And overall it's the 4th boundary. If we count those 5 wides, and he's going to 4th boundary coming. And now Parvez Rasool is feeling that kind of heat. He goes across and having a word with Mushtaba Yusuf that you have to do this and that. Keep it simple, wide of the off. But Nag is a terrific batter. He is under pump at the moment. Bowler need to find a way to get rid of Nag, who's on song here. That one swings again. That is his strength. He's going to do that. He's never going to look back. Oh, look at the smile. They're enjoying these moments. And there is the famous one in the valley. Comedian, 17 for none as we are in first over. They're chasing 124 from their allotted overs. But what a start. Rapid start. They're after fly, and that's what their side is known for. And that's what Ishtiaq is capable of. He's under 12 of just 4 balls, batting with the strike rate of 300. Am I right? And we'll have to wait and watch. The next one is coming up. Here is Mushtaba again. Oh, that one up the inside edge. It's going down to a short mid-wicket. A single is all. He's going to get 18 without loss. Mushtaba going with the pace, but he's unable to keep it simple and tight. And that brings Nasir Bashir Kumar on strike. And this over has seen 5 wides, 4, 4, 4 hat-trick of boundaries. 3 boundaries on the trot for Nag. 1 down to the backward of square, next one down to the third man. And then we saw that up and over mid-on, down to the wide mid-on fence for 4. So 3 boundaries coming. It's 18 for none after 5 balls. Well, thank you very much for this gesture. And in the meantime, the last ball of over number 1 is coming up. Here he goes again to Nasir Kumar. And Kumar trying to cut that when he's beaten on that occasion. Bending his knees little bit. Overdone. Expensive to start with 18 of it. हार्दिक स्वागत, धन्यवाद मुनव्वर। ओवर की समाप्ति 18 बने पहले ओवर में और कुछ विस्फोटक अंदाज नाग का और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर जिक्र करें हम इस मुकाबले की तो 124 रन मात्र आपको बनाने और ऐसे में 3 मुकाबले आप जीत करके आए हैं, तो
तो किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव आप पे है नहीं। 6 अंक लेकर के आप अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो शायद ये भी एक प्लस पॉइंट है इस समय रॉयल गुडविल के पास। और वो शुरुआत से ही अटैक करने जाएंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास होगा। और क्या सोपोर स्टैलियंस की टीम रोक सकती है, ये बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि 124 मात्र बनाना है जीत के लिए। और पहले ओवर में मुजतबा यूसुफ के 18 आए, अच्छी खासी गति का इस्तेमाल किया। आसिफ रसूल दूसरे छोर से उनका इस्तेमाल साउदर्न पवेलियन एंड से। इश्तियाक रसूल और खूबसूरती के साथ खेला, फील्डर उस और डाइव लगाकर रोकने का प्रयास, सफलता मिली, पर बल्लेबाजों को 2 रन लेने में कामयाबी मिलती हुई 2 और खाते में। और 2 रनों के साथ रन संख्या 20। 1.1 के बाद आसिफ रसूल का चयन सोपोर स्टैलियन की ओर से दूसरे ओवर में। अरे 104 रन यहां से चाहिए। 5.52 रिक्वायर्ड रन रेट, 17.14 करंट रन रेट। इश्तियाक रसूल 15 पे 6 गेंदों से। नासिर बशीर को भी खाता खोलना है। 1 गेंद का उन्होंने सामना जरूर किया। लगातार वो बॉडी लैंग्वेज से देखते ही बनता है, क्योंकि आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल के बीच ये संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। और क्या यहां बाजी आसिफ रसूल ले पाएंगे या फिर इश्तियाक रसूल, ये देखने लायक होगा। गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष। आसिफ रसूल सामने वाले छोर से और इश्तियाक रसूल सामने। ओ बड़ा स्ट्रोक, कनेक्शन सही, स्टैंड्स में डिपॉजिट। ये छक्का इश्तियाक रसूल के बल्ले से आसिफ रसूल के विरुद्ध। और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि। कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। और देखिए ऑन साइड में अगर हम बात करें, लेग साइड वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है इश्तियाक रसूल का, और वहां पे आप गेंदबाजी करने से बचे, थोड़ा परहेज करें। 26 बगैर नुकसान के। इस बार फिर ऑन साइड में स्क्वायर लेग की ओर। हालांकि 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन और खाते में 27, और उसमें से 22 इश्तियाक रसूल के बल्ले से 8 गेंदों से। और नासिर कुमार अब पहली बार इस ओवर में सामना करने के लिए तैयार। 27 रन बन चुके हैं कुमार के लिए। गेंद लेग साइड में, फेयर वाइड का इशारा, और दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा आसिफ रसूल को। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 28 तक पहुंच चुके हैं मात्र 1.3 में। 124 बनाने हैं मैच जीतने के लिए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध। 28। इस बार फिर लेग स्टंप की शेप, एक और वाइड का इशारा अंपायर का। लगातार लेग स्टंप पर अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण खो रहे हैं गेंदबाज आसिफ रसूल। 29 बगैर किसी विकेट के। रॉयल गुडविल ने तेज तरार शुरुआत कर दी है। और कुमार के लिए गेंद, भाग्य ने साथ दिया अंदरूनी भाग। स्टंप से टकराती तो निश्चित तौर पे कहानी कुछ और होती, अपना विकेट गंवा सकते थे, पर सुरक्षित अभी भी क्रीज में। अगली गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक और सीधे दर्शक वीरगांव में एक और छक्का। इस बार नासिर कुमार के बल्ले से खाता खोलता हुआ कुमार का 6 पर पहुंच गए। और कुल रन संख्या रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की मात्र दूसरे ओवर में 35। और क्या बल्लेबाजी। और जानते हैं लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है। एग्रेसिव स्टार्ट, तेज तरार पारी, विस्फोटक अंदाज दोनों बल्लेबाजों का। यहां पर रन नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर तैनात हैं। 35, 1.5 और अब अंतिम गेंद पर रन नहीं, तो ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में 35 रन। पहले ओवर में 18, इस ओवर में 17, 2 के बाद 35। रॉयल गुडविल 124 के जवाब में। Expensive overs from both ends. Asif Rasool conceded 17, and Mujtaba, he was taken on in the very first over. Couple of boundaries we saw. 5 wide just to start with, then there were a couple of boundaries for Ishtiaq Rasool, who's on to 22 of just 8 balls, and Nasir Kumar betting on 6 with that handy 6 against the likes of Asif Rasool. Azim Qazi is given the ball. What can Azim do now? Yesh Garg, he wreaked havoc. He ripped through the top order as he dismantled the top order of Sopore Stallions with 2 wickets
in 1 over, it's where things change it. Can Azim be the man for Sopore Stallions now with the ball? Scoring couple of runs with the bat. Now he's got an opportunity under lights. 35 on the board in 2 overs. In no time. Current rate is 17.50 an over. The required rate is 4.94. Azim begins the fresh over. And now goes with that one. Flow with flourish. It's gone flat 6. Square on the on. Over scare leg for 6. 41 for none. And Azim Kazi is being welcomed with a tremendous bat speed. A cracking sweep shot. What can Azim do? First ball 6. Straight away under pump and pressure. Here he comes on to ball again. That one keeps low. And that save it. Ishtiyaq Rasul. Well, look at that one. It didn't rise. That is the problem with the surface. Sometimes it keeps low and Nag unable to play that one. He's trying to swipe it away. And he went for that sweep shot again. Doesn't connect. 42 for none. 7 up 2 balls here. Nasir Bashir Kumar. Dig out nicely. Is it in the gap? There is a man. It's Mujtaba Yusuf who does well to stop the ball. At a wide-ish, a long on area. He comes from that Kaukana area. He covered almost 5, 6 or 10 yards around that. Does mop up. Nicely done on that occasion. From that Kaukana, isn't easy to keep that one under check. And limits the scoring down to a paltry single. Azim again. Half tracker. Punched. Just a single there for Ishtiyaq Rasul. Nag moves to 29 of 11 balls. What 10 innings again. A batter. One can't guess. You can't imagine how the bat is coming down. What kind of speed he's generating. He can play either side of the track. When required, he can up the tempo too. Look at that one. It stays low. And Nasir Kumar somehow keeps it away. He crouched low and bending his back a little bit on that occasion. They are 44 for none in just 2.5. One last time in this over, Azim Kazi. This time Nasir picks that one up. One bounce into the wideish long on fence for 4. And with that 4, it's 48 for the loss of no wicket after 3 overs. Well, that's gone. Pardon me. Take a look again. Watch this one. That's gone flat. Look at that one again. Oh, it landed beyond the boundary line. And there it is, the correction. As Nasir Kumar corrected me on that occasion, that it landed beyond the boundary line. Good shot again. Nice pickup. All smiling. It's because of tremendous bat speed. The bat flow continues. Runs keep coming. And fireworks are going on. They're enjoying this innings from Nag and his counterpart as they are going after the bowlers. I don't think it will take too much time if these two kept going in the same fashion. If these two stay for the next 4-5 overs, it's 50 already on the board. Half the job is done. Half needs to be done. It's because of their natural style, the flow they carry and continue with. The next one. Oh, again a good shot punched. But there is Mujtaba to protect that one and save it a boundary. Anything either side, you're going to get more than one. You will get a boundary for that. It's the power play which is on. Mandatory restrictions applied. And Nag is making good use of that power play here. It is Asif Rasul again. Wide off the off this time. Up and over the man at cover. In no time into the fence for 4. And Mujtaba could do no more on that occasion. He could only watch that when it just takes over. And like that, a flight coming up the ground and flies over the man. They look at that shot again. With that 4, it's 54 on the board. One bounce into the fence. Here is Asif again. Wide up the off again. And this time, that's gone for a maximum. It is 60 after 3.3. And Nag continues with that absolute carnage in the middle. Fireworks are going on. And people are enjoying this. They're whistling at the moment.
The stadium is abuzz. Look at that shot again. Punched. Aerially goes and goes for full Monty. लगातार प्रहार, एक बार फिर और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और चौका। या रनों के बरसात लगातार इश्तियाक रसूल के बल्ले से मात्र 15 गेंदें खेली और 43 रन। अरे क्या लाजवाब और बेहतरीन बल्लेबाजी, आकर्षण किया है, आक्रमण किया है, वो भी आसिफ रसूल के विरुद्ध। और जानते हैं आसिफ रसूल की क्षमता को। ऐसे में 64 इस बार लेग साइड में, हालांकि फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे पर गेंद पड़ने के बाद नीचे रही। और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 64, रिक्वायर्ड रन रेट 3.71, करंट रन रेट 16.70, 43 पे 16 गेंदों से नाबाद इश्तियाक रसूल सामने। इस बार खेला जरूर सीधे फील्डर के पास, दौड़ पड़े यार, रनआउट का अवसर और स्टंप्स भी खेल दिए। थर्ड अंपायर को संभवतः रेफर कर दिया गया है और देखना होगा क्या ये क्रीज से दूर रह गए हैं तो फिर पहला विकेट। पर चल पड़े हैं नासिर कुमार और दर्शकों का शोर गूंजता हुआ। निश्चित तौर पे आउट करार दिया गया है और इस प्रकार से पहला विकेट रन आउट के रूप में नासिर कुमार, हालांकि पहले ही चलते बने थे और निश्चित तौर पे यह पहला विकेट। पर तेज तरार शुरुआत मात्र चौथे ओवर में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 124 के जवाब में 64, 60 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए। अभी भी इस ओवर की एक गेंद और उसके बाद 16, तो कुल मिलाकर 97 गेंदों से 60 रन, 13 रन बनाए, 7 गेंदों से रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। Nasir is gone, isn't happy. You can see that. He's telling Nag, you sacrificed my wicket. It's hard to believe. Well, it's just like that bitter pill to swallow. It's disheartening from Nasir's perspective. He's going back to pavilion without waiting for the TV umpire to make that signal. He knew that he is well short of his ground there. Now Baba has got the ball in his hand. Baba has got a good form. Is he going to carry on in today's game? He's carrying that good form from South Kashmir to this part of the world. In the meantime, Baba is getting ready to operate. This is going to be the fresh over. Baba, what can Baba do with the ball now? Half the job is done. 64 on the board at the cost of 9 wickets intact. They need 60 more runs to prevail. And that will mean they will be having 8 points from 4 games. The only side in the tournament with that kind of consistency. And look at the Royal Goodwill. They're enjoying their royal ride. The royalty continues in the valley. They're on top. Improve the game. There are going to be compliments for the club. And you can see that crowd is abuzz. Stadium is lit up. Literally lit up. 64 for 1. Over number 5. Nag is clean bowled. The very first ball of the fresh show, and look at the celebration. It's West Baba who triggered that. And Nag is on his way back to pavilion. 64 for 2 now. The Dangerman departs. And Royals are 2 down. The much needed wicket for Sopore Stallions on a very first ball. Take a look again. Goes across the line. It stays touch low. Going on to hit the off pole. And look at the celebration. And you can see that there's a kind of frustration as they were on the receiving end. Don't you think that it was better to go with the West Baba? As he's carrying that good form over the past couple of weeks from South Kashmir to this part of the world. He has been right on money. He's hitting the right areas, right lines and lengths. And that is making him special with that tremendous pace. With that, Adil Rishi, the local lad, walks in at number 4. He's from Heart of Street. 64 for 2. We are in over number 5. Look at the crowd. It's in good numbers today. Tens of hundreds around the center. They were cheering for Nasir Kumar and his partner
Ishtiaq Rasool. It's down to Adil Rishi and Vaiteli now. The duo technically sound. They do have the techniques to adapt and adjust. Baba has got the tremendous pace. Zenegir Express. Removed knock on a very first ball. It was unexpected one against the run-up players. We saw the back of knock on a very first ball of the fresh over. This is over number 5. The two flatten at the chase. Should be easy one for Middle and Dowda, the batters. But it will be early to say they will walk away with ease. 64 for 2. Baba once again right on money. Welcome the newcomer with a beauty. It kicked, it jumped up the surface. Adil Rishi right behind to block this one. And he's also talking about that. Look, Nazir, he's also talking about that. There is a bounce, there is extra bounce. Ball is jumping, it hurries at times. And this is going on. So you can't guess these pitches. Even experts can fail here. What we have seen, totally different wickets here. 64 for 2. I believe those who can adjust here can play every wire. This is the 5th over. Baba again with a slip in place. Now slip is added. Should have been earlier on in that place. And who knows? Now could have been in their kitty in the very first over. It is 65 for 2 in over number 5. But what a start. Rollicking, prolific, rapid, pacey. They ran away with the scoreboard. 65 already put on the board. They were piling. 2 for 65. Time for resurrection in the middle. 65 for 2. OS Baba from Southern Pavilion and again. That one stays low. And Vaiteli right behind it. And that's how you have to keep it away. They require at the rate of 3.85. They're going at the rate of 13.93 and over. And this over, just a single coming. Given away a paltry run. And remove the danger man. Ishtiaq Rasool, who dismantled and demolished their pacers to great extent. But it was OS Baba who brought them back to some extent. Some respite for the bowlers. 2 for 65. 65 2 विकेट पे 5वां ओवर वर्धमान में. वाहिद तेली और आदिल ऋषि बीच मैदान में. पर वो विकेट इश्तियाक रसूल का जो कि लगातार प्रहार कर रहे थे, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें चलता क्या था. पहली गेंद पर वो इस बाबा ने एक और बेहतर गेंद, खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यवस्थ कर दिया बल्लेबाज वाहिद तेली को ओवैस बाबा ने. क्या शानदार गेंदबाजी, क्या शानदार शुरुआत. 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट. कमाल का आंकड़ा. दिलचस्प गेंदबाजी विश्लेषण ओवैस बाबा का. शुरुआत बेहतर. नाग का विकेट प्राप्त किया. मात्र 1 रन खर्चा अपने पहले ही ओवर में. वो 4 ओवर में 64, 5 में 65, 2 विकेट. पहले रनआउट के रूप में नासिर कुमार, फिर नए ओवर में ओवैस बाबा की पहली गेंद पर साफ बोल्ड किया था वहां पर इश्तियाक रसूल को. तो अब तक 2 विकेट पर उतना लक्ष्य बड़ा है नहीं. 124 तक पहुंचना है. कोशिश जरूर होगी यहां 1-2 विकेट जल्दी जल्दी प्राप्त करने की. थोड़ा संघर्ष बना रहे इस मुकाबले में. अन्यथा अब 5 ओवर में 65. फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल एंजॉय कर रहे हैं दर्शक. जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. और कमाल की गेंद थी. पूरी तरह से यहां पर चकमा दिया बल्लेबाज वाहिद तेली को और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर आसिफ रमजान ने. 65 पे 2, 5 के बाद 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन. वो आक्रमण शुरुआत में, वो विस्फोटक अंदाज शुरुआत में. और बाबा ने बहुत ही बेहतरीन, जहां हर गेंदबाज के बाद 14, 15, 13 रन बटोरे, वहां ओवैस बाबा ने मात्र 1 रन दिया अपने पहले ओवर में. और मुस्तफा यूसुफ जिन्होंने शुरुआत की थी, वो काफी खर्चीला ओवर गया था. 18 आए थे उस ओवर से, उन्हें हटा लिया गया था. अब जाकर के 6ठे ओवर में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दूसरे स्पेल में. पहली गेंद आदिल ऋषि के लिए और वापस बॉलर की दिशा में. हालांकि वहां पर फील्ड करने का प्रयास था, थ्रो किया पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए. 1 रन और आदिल ऋषि और वाहिद तेली के खाते में. रन संख्या
रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 66, 2 विकेट अभी तक गंवाए हैं सोपोर स्टालियन ने, पर रन ज्यादा है नहीं क्योंकि 124 तक पहुंचना है। ये अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास था पर असफल रहे वहां पर मुजतबा, और 1 रन जरूर मिला। ये संघर्ष के समय गेंद और बल्ले के बीच 66 पे 2, 58 की और आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए। दूसरा ओवर मुजतबा यूसुफ का, 1.1 ओवर 19 रन उन्होंने खर्चे हैं। 1 विकेट की तलाश, क्या यहां से एक सफलता अर्जित कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा। मुजतबा सामने वाहिद तेली, इस बार फ्लिक किया कलायों के दम पर, गैप में गई है गेंद और जाएगी फील्डर के पास, पर सिंगल यहां पे मिलता हुआ संभवतः दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या में वृद्धि होती हुई 1 रन और 67 पे 2, 5.2 के बाद 12.56। वो अटैकिंग क्रिकेट, वो तेज तरार शुरुआत आज प्रारंभ में ही, वो विस्फोट किया शुरुआत में नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल ने। कुमार रनआउट के रूप में पहले विकेट के रूप में चले गए, फिर इश्तियाक रसूल को बोल्ड किया ओवेस बाबा ने। आदिर ऋषि और वाहिद तेली के कंधों पर दायित्व, और उस दायित्व को निभाना जरूरी यहाँ पे। ऑप्शन से बाहर जगह मिल गई, काट किया खूबसूरती के साथ गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस बुखारा, ये 4 और खाते में, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 71। मध्य क्रम पे उस प्रकार का दबाव नहीं होगा क्योंकि सामने जो शुरुआत मिली है वो बहुत तेज, वो आक्रामक शैली से बल्लेबाजी। 71 तक रन संख्या पहुंच चुकी है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। आदिल ऋषि के बल्ले से यह चौका, 6 पर पहुंच गए। 4 गेंदों से वाहिद तेली 1 पे, उन्होंने भी 4 गेंदें खेली है। 3.66 प्रति ओवर के हिसाब से ये रिक्वायर्ड रन रेट इस समय रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब बनाम सोपोर स्टैलियंस 17वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। सामने बेहतर स्ट्रोक, गजब का स्ट्रोक, सामने की ओर चौका, 4 और खाते में। आदिल ऋषि एक अनुभवी खिलाड़ी है और जानते इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी किस प्रकार की करनी है, और दबाव है नहीं किसी प्रकार का। मैंने पहले भी जिक्र किया, वो तेज तरार शुरुआत मिली है, और उस शुरुआत के चलते जब आप पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं है तो आप खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हैं। और देखा जाए तो एक और चौका आदिल ऋषि के बल्ले से, 75 पे 2, 5.4 के बाद मुजतबा ऋषि के लिए इस बार पैर उड़ाया और पीछे खिलाड़ी संतुलित हो रहे, कैच छोटा, आदिल ऋषि का कैच। जब आपके सामने लक्ष्य इतना छोटा और फिर इस प्रकार का क्षेत्ररक्षण, तो फिर कहां मुकाबले आपके पक्ष में आएंगे। काफी ज्यादा हवा में रही थी गेंद, नीचे संतुलित खिलाड़ी हुए जरूर थे, पर हाथ में आने के बाद गेंद चिटकी और जीवनदान मिला आदिल ऋषि को। रन भी साथ में मिलता हुआ 77, तो कैच छोटा आदिल ऋषि का। कुल रन संख्या रॉयल गुडविल की 77 पे 2, 5.5। अंतिम गेंद का आना बाकी, ये 6वां ओवर। आदिल ऋषि 12-6 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से, और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं, ये देखते हुए कि 124 तक पहुंचना है। और ये अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा कोण बदला विकेट कीपर के पास, और अंतिम गेंद के साथ ही ओवर की समाप्ति। 6 समाप्त, रॉयल गुडविल 77 पे 2, 124 के जवाब में। Catches win matches put down up the bowling of Mujtaba Yusuf. The young generation loving the game of cricket. It's a festive time here in Bakshi Stadium. JK Super Cement Red Premier League Season 2 presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. And thanks to the sponsor of JK Sports Time. I start with Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pump or amateur multi-brand by Rafiwani. Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. H&D, a complete kids wear near Netipura, Srinagar. Just Bukhara. One of the special. And look at the attendance. Coming in good numbers. Huge attendance here. As expected for Royals game. It's a full house again. 77 for 2 after 6 overs. As we're done with the power play here. Power play is over. It's 2 for 77. OS Papa 1 over, 1 wicket, and a paltry run given away. Just a solitary run of that over. Why Tele is got other issues on to 12 of 7, and Tele is on to 1 of 4 balls. 77 for 2. Papa begins the fresh over first ball.
They're looking for one here. Good running between the wickets. They're so nice there. This is good cricket and smart cricket from Rishi and Vaitele. It was a call of Tele and Adil Rishi responded. He says, yeah, I'm going to make it. 78 for 2. We're into the 7th over. Match number 17. It's day number 10. We are bringing you the ball-by-ball commentary from the iconic and the beautiful venue of Bakshi Stadium in the meantime. Baba again. This time Adil decided to give himself charge and Baba is showing that aggression with the ball. Baba continues to operate. He's in his second over. He has found his form. He's bowling really well nowadays. He's hitting the right lines and lengths. That's the important aspect. That is the important thing. And he's just trying to stress on it nowadays. From south to this part of the world, we have seen a couple of maiden overs. They're going to check that front foot no ball. The strike umpire Balvindraji has sent it upstairs, asking the TV umpire to assist. And they're going to look into this one here. It's a fair ball, no problem there. And he's going to continue and carry on. He's okay there, he's fine there. Two for 78. 7th over we are in. As we watch Baba again. Rishi on strike. 12 of 8. Lucky. He's put down once. Got a lifeline. That's why he's breathing at the moment. Shuffle across. He's also looking for a big shot here. 79 for 2. The two batters are also trying to be aggressive. But not getting something where they can excel and they can think of a big shot. Once they feel that the length is affordable, it's where we can excel and we can hit it away from the center, they will try to go hard at that. But they're not feeling at the moment that it's a right length to hit. 2 for 79. Halfway mark in 7th over. Baba bowling really well at the moment. He's keeping things tight at the moment. Look, he's tightening the screws. Has brought Soporeans to some extent back to the life. As their crowd lost voices, they were lip-locked and shell-shocked. And it was a kind of a shock. When Nag started all guns blazing, there was no stopping. It was more than that. It was the intensity was more than that. 2 for 79. This is 7th over we are in. Baba once again to Tele, and Tele keeps it away to mid-on. And look at the captain, the skipper, Parvez Rasool. The two batters, they were thinking of the second, and captain was right there to prevent that second run. 80 for the loss of 2 in 7th over. Well, beginners half done. What a start they provided. Nasir Kumar Bashir and Ishtiaq Rasool. Nag, how terrific he is. The ferocity he has got. The boisterous. It's sometimes like that of Typhoon. And sometimes it's speechless. And he's going to keep you away from the game. He's going to drag you. It's going to push you away from it. And look, the way he started, it was all guns blazing. Half the job is done. And little job needs to be done. And they're going to be on the line with another victory here. Onto the front foot. Keeps it away. Just a single. 81 for 2. 7 overs done. They're 43 runs behind. Is it? They're 43 behind from 78 balls. सात समाप्त 81 बने, 2 खोए, 8 सुरक्षा. वाहिद तेली और आदिल ऋषि बीच मैदान में. आपके सामने लक्ष्य नहीं है उतना बड़ा. और वो स्टार्ट तेज तरार, वो विस्फोटक अंदाज नाग और नासिर कुमार का. और खासकर नाग ने जिस प्रकार से प्रहार किए, एक मजबूत आधारशिला प्रदान कर दी अपनी टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को. ये चौथी लगातार जीत होगी. पूले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे अंक तालिका में. यदि ये मुकाबला जीत करके वो 8 अंक के साथ सर्वश्रेष्ठ रहेंगे.
और वहीं पे सोपोर स्टैलियंस को ये मुकाबला जीतना हालांकि आसान नहीं है। 81 पे 2, 7 ओवर 13 ओवर का खेल, 43 रनों की आवश्यकता। तो बल्लेबाजी में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर गुडविल की बात करें, वो पहली पारी में उतने रन बने नहीं है, 123 रन मात्र उन्होंने बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी टीम। परवेज रसूल शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले ओवर की, और पहली गेंद पर सिंगल। 82 पे 2, 7.1, 42 चाहिए, 77 गेंदों का आना बाकी। ये 8वां ओवर, परवेज रसूल का पहला ओवर, पहली गेंद पर सिंगल। अब सामने इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 82 पे 2, 2 गेंदें हुई हैं, 1 रन आया, और ओवेस बाबा के वो 2 ओवर बहुत ही बेहतर जिसमें नाग का विकेट मिला। वाहिद तेली सामने खूबसूरती के साथ खेला, जरूर पीछे खिलाड़ी और सफाई के साथ गेंद को फील्ड तो नहीं कर पाए, पर केवल 1 रन तक संतुष्ट रखा दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में 83 पे 2, 7.3, 83। और अब आदिल ऋषि सामने 15 पे 11 गेंदों से। परवेज रसूल अच्छा स्ट्रोक, एक सिंगल मिल जाएगा। गुलजार गुली सामने, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक एक रन से, क्योंकि जानते हैं उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, अभी अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं। 84 पे 2, 7.4 के बाद 3 रन आ चुके हैं 4 गेंदों से परवेज रसूल के इस ओवर में। एक और सिंगल आ जाएगा यहाँ पे, पीछे लॉन्ग ऑफ तैनात है। 1 रन और खाते में। 85, अब तक 4 सिंगल ओवर में 1 डॉट, आखिरी गेंद का आना बाकी। 7.5 के बाद 85 पे 2, 16 पे आदिल ऋषि सामने। और वाहिद तेली ने 5 बनाया है 10 गेंदों से। ये ऑफ स्टंप से बाहर थे, ललचाया जरूर था। एक सिंगल जरूर मिल जाएगा। ओवर से आए 5, 8 समाप्त। 86 पे 2, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। 38 चाहिए 72 गेंदों से। Parvez in his very first over, economic. Good over this. Just 5 of it. The captain of side, keeping it tight straight away in his very first over. Couple of things gone wrong for Sopore Stallions tonight. Will have to bounce back in the remaining games. Before making it to the quarterfinals, they have to fix some of the areas. They need to work on it again. And some work needs to be done before you make it to the quarterfinals. Once you are into the Super 8, you don't have any other opportunity. You have to do it prior to that. Little up and in the gap too. Should get that second one with ease. It's 88 for the loss of 2 into the 9th over here. Baba is bowling in his third over, 1 for 7. OS Baba, one of the star bowlers from Sopore, is bowling at the moment. He has picked up a wicket and removed Ishtiaq Rasool on his very first ball. And it's 88 for 2 this time. Makes a kind of room and is taken at mid-off. Captain takes that one. Is it a drop chance? Has he got him? We'll have to wait and watch. What's going on? Are they going to check that front foot first? Or will they look into this catch? What they are looking for at the moment. It's a no ball. Signaled by the strike umpire after asking the TV umpire to help me. And he's come up with the call of a no ball and he's not out there. No problem at all. Because bowler overstepped it. OS Baba overstepped there. And that's the problem. That is going to remain with OS Baba. When he's going to improve there? How much time it's going to take?
Baba to improve there. When he's going to learn that I need to be perfect there. I can't go over the line again and again. That's a free ball and is dispatched over wide-ish mid on. All the way for a magnanimous hit. That is a great shot. And with that 6, addition to the tally. Free dispatched by Adil Rishi. It is just like that, break a leg. And he goes with that shot with no fear. And that's going to shock the bowler for a while. 95 for 2. And in the meantime, here is the next one. Keeps it away top side. Does well with that angle blade. Only a single. One more run taken. It's 96 on the board. They're 28 runs behind. This is the 9th over we are in. As Baba continues to operate. Baba is bowling in his 3rd over. He's conceded 15 and picked up a wicket. You're watching JK Sports Time Facebook. You're watching JK Sports Time YouTube. And you're also part of Red FM JK YouTube channel. And may I remind you, we are also available in Play Store nowadays. You can install the app and keep going. It's 2 for 96. We are in over number 9. The next one from West Baba. Wide on strike. Wide works it away. Clipped away onto the onside. That's a good work done by Wide there as he works it away for a single. आदर्शी 26 वाहिद अली 6 97 पे 2.8.4 धोखे थे बच्चे ओवर की 2 3 9 10 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में 97 पे 2 अच्छी खासी मात्रा में दर्शक भारी संख्या में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आदिल ऋषि सामने इस बार कट किया स्टंप्स को कवर करते हुए थोड़ा शफल किया ऑफ स्टंप की और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और खाते में 97 से बढ़कर 98 2 विकेट पे 9वां ओवर 124 जीत के लिए लक्ष्य मिला है सोपोर स्टैलियंस द्वारा रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। बाबा का तीसरा ओवर आदिल ऋषि 26 पे सामने 97 पे 2 क्षमा कीजिएगा उस गेंद पे रन जरूर चेक किया जा रहा है एक बार फिर और नो बॉल का इशारा लगातार नो बॉल ओवर में ओवेस बाबा नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। 98 पे 2 आदिल ऋषि सामने देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे। यहां 1 रन पलटकर दूसरे की मांग है और यहां दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और खाते में 100 पूरे होते हुए 8.5 ओवर में जाकर के 100 रन पूरे हुए हैं रॉयल गुडविल के और अब 24 चाहिए मात्र जीत के लिए और लगातार चौथी जीत जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन में रॉयल गुडविल की अपने पूल से यानी कि पूल ए में सर्वश्रेष्ठ 8 अंक लेकर के वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे इस जीत के साथ ही क्योंकि 3 मुकाबलों से वो 6 अंक पहले ही अर्जित कर चुके हैं और आज सोपोर स्टालियंस के 2 अंक। पीछे फील्डर जरूर है गैप में अकेला था सिंगल मिल जाएगा। चहल कदमी करते हुए एक और खाते में 101 9 ओवर की समाप्ति। ओवेस बाबा 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। आदिल ऋषि 29 वाहिद तेली 6-11 गेंदों से। कुछ निराश चेहरे कुछ उत्साहवर्धित ये कहानी है इस मैच की। इस समय फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल म्यूजिक हाई वॉल्यूम के साथ बजता हुआ अभी भी 11 ओवर का खेल शेष है यहां से इस दूसरी पारी में। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस। शुरुआत तेज तरार
इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार ने। और उसके बाद दोनों ओपनर आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं, पर वाहिद अली और आदिल ऋषि ने एक अच्छी साझेदारी निभाई है, एक बेहतरीन शुरुआत दी है। 101 पे 2 9 ओवर की गेंदबाजी, 11 ओवर का आना बाकी, यानी कि 66 गेंदें आपके पास शेष हैं और मात्र 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पहली गेंद सम्मान दिया, एक हल्की सी अपील आदिल ऋषि पर, उसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर पे। 22 गेंद उससे 29 पे नाबाद। सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब 29, 101 पे 2 9.1 ओवर की गेंदबाजी। इस बार डाउन द ट्रैक लॉफ्टेड स्ट्रोक और गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर। और देखना होगा 6 अथवा 4 का निर्णय। बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक सामने की ओर और 6 रनों का निर्णय आता हुआ। एक और छक्का आदिल ऋषि के बल्ले से, वह पहुंच गए 35 पे 22 गेंदों से। 107 पे 2 9.2 के बाद जीशान जहूर इस बार सम्मान दिया वापस, बड़े आत्मविश्वास के साथ, किसी जल्दबाजी में नहीं है। 35-22 गेंदों से आदिल ऋषि ने अब तक बनाए हैं और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 123 के जवाब में 107, 9.3 के बाद 2 विकेट मात्र खोए हैं। बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं, गेंद के पिच तक पहुंच रहे हैं। 1 रन पूरा किया, थोड़ा ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन की मांग थी, पर वापस भेजा वाहिद अली ने। एक और खाते में 108, 9.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। 4 ओवर में 50 से अधिकतम शुरुआत में वहां से कहानी प्रारंभ हुई थी रॉयल गुडविल की इस जीत की। और इस समय 16 रन मात्र दूर। 108 पे 2, आत्मविश्वास के साथ रक्षात्मक रूप से बैट और पैड मिला करके बगैर किसी रन के अंतिम गेंद का आना बाकी। जीशान जहूर का पहला ओवर, 5 से 7 आए, 5 गेंदों से 7 रन खर्चे हैं। आखिरी गेंद होगी जीशान के सामने वाहिद अली और पैड पे टकराई, जी हां स्वीकार कर लिया, एलबीडब्ल्यू करार दिया गया। विकेट मिला यहां पर जीशान जहूर को अंतिम गेंद पर। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, 10 समाप्त। 108 पे 3, 16 चाहिए जीत के लिए यहां से इस मैच में। अपील बहुत जोर की हुई थी, पर देखा जाए तो निश्चित तौर पे विकेट का उतना ज्यादा महत्व नहीं है। हालांकि वाहिद अली वापस चले गए एलबीडब्ल्यू के रूप में, जीशान को सफलता मिली, पर 60 गेंदों से मात्र 16 रन, ये एकतरफा मुकाबला बना दिया था पहले ही 4-5 ओवर में इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार ने। वाहिद अली एलबीडब्ल्यू, जीशान जहूर 6 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, तीसरे विकेट के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। और अब नए बल्लेबाज आदिल ऋषि के साथ 36, आदिल ऋषि 24 गेंदों से। आदिल वानी आए हैं संभवतः। 60 गेंदें 16 रन चाहिए जीतने के लिए सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हो रही है डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी और उसके अलावा वैली फ्लैश गोल्ड। थैंक यू स्पॉन्सर, थैंक यू व्यूवर्स अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। और आने वाले समय में संघर्षपूर्ण मुकाबले, कांटे की टक्कर के मुकाबले, कल 2 मुकाबले लेकर के एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आखिरी लीग मुकाबला 22 को, और उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल्स का शेड्यूल जारी होगा। तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में बहुत ज्यादा क्रिकेट लेकर के जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब आपके लिए लेकर के आ रहा है। 60 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता। 108 पे 3, 10 के बाद 11वें की शुरुआत, मात्र 16 रन दूर। 123 बने थे और अंतिम ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी सोपोर स्टैलियंस की। 124 का लक्ष्य, 108 पे 3, 16 चाहिए। पहली गेंद आदिल वानी के लिए खूबसूरती के साथ, हालांकि 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से गेंद को फील्ड तो कर लिया गया ओवेस बाबा द्वारा, पर 1 रन और 59 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता। 109, 3 विकेट पे आदिल ऋषि और आदिल वानी, ये जोड़ी समय बीच मैदान में। आदिल ऋषि 37 पे, आदिल वानी अब स्ट्राइक लेने की तैयारी में। 15 चाहिए, 59 के दुकाना बाकी।
और अजीम काजी का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में उन्होंने 14 रन खर्चे थे, काफी खर्चीला ओवर गया था। इस ओवर में पहली गेंद पर सिंगल, अगली गेंद लेकर के तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद बाएं हाथ से गेंद की पिच तक पहुंचे, खूबसूरती के साथ खेला जरूर, हालांकि कवर क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, अभी भी 15 रन दूर। 109 पे 3, 10.2 ओवर की गेंदबाजी। आदिल वानी शून्य पे एक गेंद का सामना किया, अभी अभी आए हैं वाहिद अली के आउट होने के बाद, जिन्हें जीशान ज़हूर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया था। वो तीसरा विकेट मिला था सोपोर स्टैलियंस की टीम को। खूबसूरती के साथ तिरछे आड़े बल्ले के साथ दिशा दे दी, पर फील्डर तैनात, एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। 3 गेंदें 1 रन इस ओवर में, 57 गेंदों से 15, 10.3 के बाद 109, 3 विकेट पे। बाएं हाथ से काजी, एक बार फिर फील्डर के पास, और एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। चौथी गेंद, हालांकि 3 लगातार डॉट गेंदें, पहली गेंद पर सिंगल, 1 रन आया है अजीम काजी के इस ओवर में। और जानते हैं यहाँ रॉयल गुडविल के दोनों बल्लेबाज के हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, मात्र 15 रन दूर हैं जीत से, आसानी के साथ सिंगल डबल करके भी बनाए जा सकते हैं। एक और डॉट गेंद वापस बॉलर की दिशा में, ये चौथी लगातार डॉट गेंद इस ओवर में। आखिरी गेंद लेकर के तैयार, 15 चाहिए अभी भी। 55 गेंदों से आदिल वानी, 4 गेंदें, खाता खोलना बाकी। आदरेशी 37 पे, एक बार फिर आसिफ रसूल के पास, उनने गेंद को कवर्स में फील्ड कर लिया, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर से आया 1-2 ओवर के बाद 15 रन खर्चे अजीम काजी ने। 9 ओवर का खेल, 15 रन चाहिए। 54 गेंदों से 15, 109 पे 3, 11 ओवर की समाप्ति। 17वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस, जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, और साथ में रेड एफएम जेके यूट्यूब ये लाइव प्रसारण तक पहुंचा रहा है। और दर्शक अब धीरे धीरे से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जानते हैं कि अब 15 रनों की दूरी है रॉयल गुडविल को, लगातार चौथी जीत होगी और पहली ऐसी टीम जिन्होंने अपने पूल से सभी लीग मुकाबले जीते हो। हालांकि 3 जीते हैं, ये चौथी जीत अर्जित करने जा रही है और पूल ए में अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ रहेगी 8 अंक के साथ रॉयल गुडविल इस जीत के साथ ही। 109 पे 3, 11 समाप्त। जीशान ज़हूर दूसरा ओवर लेकर के 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, 15 चाहिए। 54 गेंदों से आदरेशी सामने स्टेप आउट करके बाहर निकले, खेला जरूर 1 रन के लिए, और जब तक कवर क्षेत्र से गेंद को शॉर्ट मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और 110 पे 3, 14 की आवश्यकता। 53 गेंदों का आना बाकी, और आदिल वानी अब सामने आदरेशी 38 पे, लेग स्टंप की शेद में आउट करार दिया गया। एक और विकेट, आदिल वानी आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये चौथा विकेट 110 पे गवाया है। आदिल वानी खाता नहीं खोल पाए, 5 गेंदों का सामना किया, 0 पे आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। जीशान ज़हूर को एक और सफलता मिलती हुई, और यहां पे स्टंप आउट के रूप में, और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन। आदिल वानी चौथे विकेट के रूप में मैदान से बाहर। 110 पे 4, 11.2, 14 चाहिए 52 गेंदों से। आदिल ऋषि 38 पे सामने, अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे 26 गेंदें उन्होंने खेली हैं। अब जाकर के नंबर 6 पे देखना होगा किस बल्लेबाज का अब इस्तेमाल किया गया, किस बल्लेबाज को नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। 6 गेंदें, खाता नहीं खोल पाए। आसिफ रमजान ने उन्हें कैच किया, समझते वो कैच आउट होकर के कॉट बिहाइंड। 110 पे 4, 11.2 ओवर की गेंदबाजी, 1.62 रिक्वायर्ड 100। अब आखिरी 14 रन जीत से दूर यहां रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम। गौहर लेगी 0 पे, आदिल ऋषि 38 पे। गौहर लेगी का अब इस्तेमाल किया गया है, ये देखते हुए जानते हैं 14 रन मात्र बनाने हैं, आकिमीर आपके पास हैं, उसके अलावा कुछ अन्य दीगर बल्लेबाज भी, पर यहां गौहर लेगी का इस्तेमाल किया गया। ये देखते हैं कि आदिल ऋषि एक सेट बैटर जमे हुए बल्लेबाज है 38 पे। 14 रनों की आवश्यकता 52 गेंदों से। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पे विकेट। जीशान ज़हूर 1.2 ओवर में 8 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी, उतना बड़ा लक्ष्य था नहीं, तो गेंदबाजों ने भी
हर संभव प्रयास किया पर शुरुआत आक्रमण वो नाग और नासिर कुमार ने 14 की आवश्यकता। पहली गेंद को ड्राइव किया, वहां पर मिसफील्ड हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ लेगी के बल्ले से यह चौका आया, खाता खोल लिया, 4 पर पहुंच गए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। लगातार अब जीत की ओर और डाइव लगाकर रोकने का प्रयास था, असफल रहा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 और 114 पे 4, 10 चाहिए 51 से, लेगी 4 पे। पहली गेंद पर चौका, 10 रनों की आवश्यकता, लेगी सामने। इस बार फिर एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन और खाते में। 115 पे 4, 9 चाहिए जीतने के लिए। 50 गेंदें अभी भी आनी बाकी, मात्र 9 रनों की आवश्यकता। रॉयल गुडविल लगातार चौथी जीत अर्जित करने जा रही है जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग के इस दूसरे एडिशन में। मात्र एक ऐसी टीम पूल ए से जिन्होंने सभी मुकाबले जीते हों, इससे पूर्व 3 और ये चौथा आखिरी लीग मुकाबला अपने पूल पे। आदिल ऋषि ने सम्मान दिया। 9 अभी भी जीत के लिए। 115 पे 4, वो 4 ओवर में 50 से अधिकतम शुरुआत में ही बना डाले थे नाग और नासिर कुमार ने। वो आक्रमण किया था, वो विस्फोट किया था, वो शुरुआत काफी घातक वहां बल्लेबाजों द्वारा। इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया और सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए आदिल ऋषि के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। 42 पर पहुंच गए आदिल ऋषि जीशान जहूर के विरुद्ध और खूबसूरती के साथ गैप में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब, चौका मिलता हुआ आदिल ऋषि को। और इन 4 रनों के साथ रॉयल गुडविल 119 पे 4, 12 के बाद 8 ओवर में 5 रन। और निश्चित तौर पे यह आखिरी ओवर होगा और इसमें जीत सुनिश्चित करने जा रही है रॉयल गुडविल। ये आखिरी 6 गेंदें संभव थे, हालांकि अभी 8 ओवर आने बाकी पर 5 रन मात्र, और कोशिश उनकी होगी कि इसी ओवर में इस मुकाबले को समाप्त कर दिया जाए। 5 रनों की आवश्यकता। 42 पे आदिल ऋषि, गोवर लेगी 5 पे 2 गेंदों से। 119, 4 विकेट के नुकसान पे रॉयल गुडविल की यह चौथी जीत। कल 2 मुकाबले ठीक दिन के 2 बजे आपके साथ जुड़ेंगे लाइव एक्शन में। और जुड़ना ना भूलिएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब, और उसके साथ साथ रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से। और फिर 22 को मात्र एक मुकाबला, वो आखिरी लीग मुकाबला होगा जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। फिलहाल 119 पे 4, 12 के बाद 5 रन चाहिए जीत के लिए। निराश चेहरे जरूर। मुजतबा यूसुफ का इस्तेमाल, अब दूसरे स्पेल में उनका इस्तेमाल, वो काफी खर्चीले साबित हुए थे। अपने पहले ओवर में शुरुआत उन्होंने गेंदबाजी की थी आज सोपोर स्टैलियंस के लिए। वो पहले ही ओवर में 18, नाग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके विरुद्ध की थी। 5 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए 8 ओवर में। मुजतबा यूसुफ 2 ओवर 30 रन, आज खर्चीले साबित हुए हैं मुजतबा यूसुफ। विकेट उन्हें मिला नहीं। तीसरे ओवर में करेंगे गेंदबाजी अपने कोटे के। ये पारी का 13वां ओवर। 119 पे 4, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। 5 चाहिए। सामने गौहर लेगी 2 गेंदों से 5। मुस्तफा यूसुफ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहली गेंद लेकर के 5 चाहिए जीत के लिए और खूबसूरती के साथ पुल किया इस गेंद को पर सीधे फील्डर के हाथ में। और यहां पारी हो गई समाप्त गौहर लेगी की। यह 5वां विकेट। 12.1 मुस्तफा को मिलने वाली यह पहली सफलता। गौहर लेगी ने पुल जरूर किया था, अतिरिक्त तो चाल थी, कंट्रोल में यह शॉट था नहीं। सीधे फील्डर के पास अच्छा कैच पकड़ा वहां पर खिलाड़ी ने। और 5वें विकेट का पतन होता हुआ सोपोर स्टैलियंस को 5वें विकेट मिलती हुई। गौहर लेगी ने 5 बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। 119 पे 5, 12.1 के बाद 5 अभी भी चाहिए जीत के लिए। आदिल ऋषि 42 पे लेगी कट। सुमित कुमार ने कैच पकड़ा मुस्तफा यूसुफ की गेंद पर। 1 चौका, 166 का स्ट्राइक रेट, 3 गेंदों से बनाए 5। 119 पे 5 जीत के लिए। 47 गेंदों का आना बाकी। मुस्तफा 2.1 ओवर 30 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण
17वां मुकाबला अंतिम 5 रन जीत के लिए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। यश गर्ग एक बेहतरीन और शानदार गेंदबाज, इस टूर्नामेंट में अब तक वो 17 विकेट ले चुके हैं। पहले मुकाबले में अथवास इंडिया 11 के विरुद्ध 6, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध 6, स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 2 और आज सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 3। तो कुल मिलाकर 17 विकेट सबसे सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने का श्रेय प्राप्त किया है यश गर्ग ने अब तक के इन 4 मुकाबलों में। 119 पे 5, 12.5 चाहिए यश गर्ग सामने। और गेंदबाजी का दायित्व मुजतबा यूसुफ के पास सोपोर स्टैलियंस की ओर से। पिछला मुकाबला जीत करके आए हैं स्पेक्ट्रम किंग से सोपोर स्टैलियंस, और इस मुकाबले में रॉयल गुडविल के सामने, पर यहां हार के कगार पे। अच्छी गेंद थी, सटीक लेंथ पे सटीक यॉर्कर का प्रयास, पर ब्लॉक किया गर्ग ने बगैर किसी रन के। और अगले 2 मुकाबले सोपोर स्टैलियंस को सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और अथवास इंडिया 11 के साथ खेलने। तो एक टफ चुनौती आने वाले समय में, एक कड़ी चुनौती आने वाले समय में। 119 पे 5, 12.2, अभी भी 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यश गर्ग सामने मुजतबा यूसुफ के। और देखना होगा क्या बची हुई 4 गेंदों से ये 5 रन बना पाएंगे। इस ओवर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो 46 गेंदों का आना बाकी। यहां सिंगल मिलेगा, पीछे फील्डर तैनात हैं थर्ड मैन पे, 1 रन और खाते में। और अब 4 रनों की आवश्यकता, पर सामने आदिल ऋषि 42 पे, यश गर्ग 120 पे 5, 124 बनाने, 120 बना लिए हैं। 4 रनों की आवश्यकता, एक बड़ा स्ट्रोक तो मुकाबला रॉयल गुडविल के नाम। ये चौथी लगातार जीत अपने पूल में इस टूर्नामेंट में। वाहिद एक ऐसी टीम जो 4 के 4 मुकाबले, सभी मुकाबले जीत करके अंक तालिका में सबसे ऊपर। आदिल ऋषि सामने 42 पे, 120 पे 5, 4 रनों की आवश्यकता। मुजतबा यूसुफ लेकर के अगली गेंद, सामने आदिल ऋषि, 4 रन दूर गुडविल। और यहां पे विकेट आदिल ऋषि का, अपने स्ट्रोक को चेक करने के अंदाज में कैच थमा बैठे मुजतबा यूसुफ को। आदिल ऋषि की पारी हो गई समाप्त और एक और विकेट गवाए। यहां पे 6ठा विकेट मिलता हुआ सोपोर स्टैलियंस को 4 रन दूर जीत से, पर ये 6ठा विकेट पढ़ नहीं पाए इस लेंथ बॉल को और अपना विकेट गवा बैठे। और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ और मुजतबा को इस ओवर में यह सफलता मिलती हुई। आदिल ऋषि खूबसूरत कैच पकड़ा और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ सोपोर स्टैलियंस को मिल गई 6ठी विकेट। 120 पे 6, 12.4, 4 रन चाहिए जीत के लिए। और आसिफ मंजूर आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। 4 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 120 पे 6, वो 4 ओवर में तेज तरार विस्फोटक शुरुआत, वह कहानी ने वहां से रंग बदला। 120 पे 6, 12.4 ओवर की गेंदबाजी, मात्र 4 रनों की आवश्यकता। यश गर्ग 1, आसिफ मंजूर 0 और 4 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। और पहले 4 ओवर में 50 से अधिकतम विस्फोटक शुरुआत और यहां 120 पे 6। और फिर शुरुआत मुजतबा यूसुफ के पहले ओवर में 18 रन आए, अगले ओवर में 17 रन अन्य गेंदबाज ने खर्चे। वो 3 ओवर में 49 रन। 120 पे 6, 4 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। आसिफ मंजूर सामने, 2 गेंदें बची हैं मुजतबा के इस ओवर की। पहली गेंद पर विकेट, फिर डॉट, एक सिंगल, फिर विकेट, 2 विकेट इस ओवर में। 2.4 के बाद 31 रन खर्चे हैं, 2 विकेट मुजतबा। आसिफ मंजूर के लिए 120 पे 6, 4 की आवश्यकता। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, सही दिशा और लंबाई पे फेंकी हुई ये गेंद मुजतबा यूसुफ द्वारा। एक और डॉट, 4 की आवश्यकता। 43 गेंदों का आना बाकी।
Just 4 runs away, 1 shot away from winning. For Mujtaba, 120 for 6. They need 4 runs to prevail. Parvez has got the ball in his hand, the captain of Sopore Stallions. I agree with your statement. It was Nag and that crucial stand between Nag and his partner Nasir Kumar that changed the game completely. And it's where the game changed in no time. And last 3 overs yielding just 5 runs. And we have seen a couple of wickets going down. Now they're 6 down. Yash Garg and Asif Manzoor in the middle. Parvez has got the ball in his hand. He has bowled 1 over, none for 5. He's going to try his luck here against Yash Garg, the highest wicket taker of the tournament. 17 to his name in the tournament. (120), 4 runs away. He's got a slip in place for Yash Garg. And Garg gives it respect, plays it back along, not 4 runs. 1 shot away. Who's going to score those winning runs? Yash or Asif Manzoor? Let's see. Asif Rasool in slip cordon. Oh, Yash once again a solid defense. But against the likes of Yash, it isn't easy to defend the ball. All the batters found it difficult. All batters finding it tough to face Yash Garg throughout the tournament. And it has been a tough one to keep the ball away in that kind of a style. Going with the defensive approach against the likes of Yash. Yash is on strike here. Another good delivery. Right on money again. Yash is going to block it. He knows that just 4 runs away. And a wicket here will mean that things are going to be tricky. So it's better to finish the game before it's too late. 1 shot they require here to edge past Sopore Stallions. Clips it away. We'll look for 1 here. Just 3 away now. Royal Goodwill. That brings Asif Manzoor on strike. 121 for 6. 3 more runs needed. From 38 balls. Parvez in his second over. He's wicketless. But pretty good as far as Parvez is concerned and his individual figures are concerned. Asif Manzoor. Will he go big here? Is he going to finish the game here? He decided to take him on, but in the end changed his mood. We'll keep it down to 1. Now 2 runs away. 1 to tie, 2 to win. Yash on strike. The last ball of over number 14. Yash is going to try with a lone slip in place. Yash drives it back along the track. And Parvez stop at that one in the follow through. So no problem there. 2 needed from 36 ballers now. For a while I thought Yash may be struggling. But that didn't carry properly. So no problem at all. Just 2 away. Asif Manzoor is going to be surely the man to finish it off here. On strike. Mujtaba has got the ball again. They need a miracle. 4 wickets never going to be easy. It should have been last wicket in. And 2 runs needed. But they have 4 wickets in kitty. Just 2 needed. Talking about the Royal side. Their team. Reckless and flawless in Red Premier League Season 2. They are the defending champions. 122 for 6. Well, last time in this over. First time in this over, and that one
I thought it's going to be the last time in the match, but it's blocked on offside. Once again, he has to reload and rebowl that one. Of course, they shown that fight in today's game. Agree with your statement, sir. We have a producer and the director alongside. And you know that commentary is run by the set station, the producer and the director. That's how it works. It's a composed program, well composed one. 2 away from 35 balls. Take a look, and this man is going to be concerned this evening as he has lost that happiness for a while. 2 needed from 35 balls. But this lad is so nice when it comes to the camera work. He's an artist there. Without any shy, he's capturing every moment. Yash has given respect to Parvez in that over. But it's Asif Rasool on strike. It is Asif Manzoor on strike against the likes of Mujtaba Yusuf. Mujtaba in his 4th over, 2 for 31. And he picked up 2 wickets in that 3rd over of his quota. And he looked lethal in that over by removing 2 of the batters. The last one I saw when I entered the box again, it was Adil Rishi who was caught and bowled. And that's the difference. First 4 overs yielded 54. The next 4 overs we saw at the fag end, just 7 coming. That's the difference. And that's what cricket is all about. Now changing its ends. Oh, that one. He was about to celebrate. He was about to punch the air. But ball stopped all of a sudden. Little Smiley thought this will sneak through. And it didn't squeeze through. It stopped all of a sudden. It's 2 needed from 33 balls. He thought for a while. And those who want to be here physically, log on to www.district.in and you can buy you a ticket there. Just 2 away. 122 on the board. In the meantime, Mujtaba is getting ready to operate again. I think Asif will finish it off here. That's why he's keeping mid-shot of strike. 2 away. Oh, does well again. Digs it out. Good delivery. Yokes him again there. And Mujtaba is showing that fight again. It should have been 150 on the board. Would have been a good game of cricket. But talking about that, should have been ifs and buts don't work. It was a Royals work. They did well with the ball. And with the bat, it was humongous. It was incredible hitting. And insane we can use for a while because it was 54 of just 4 overs. Just 2 away. Now that is a quality shot. Asif Manzoor finishes things off with a 6. So that's it we have for you from this game. Join us tomorrow. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.